construction of flooring is the best in the country, sir. So despite all these measures, and despite raising this issue by me and by my party people, sir, repeatedly in this house for the last 2.5 years, so this has not been allowed, but a stepmotherly treatment has been given to Orissa by allowing it to Karnataka, sir. Right. Thank you, sir. Sujit Kumar, associate, time nahi hai. Sujit ji. I'll quickly supplement what my colleagues have said and strongly urge the government to show a non-partisan attitude, and what they have done for Karnataka, similar steps also should be taken for Odisha, and the Awas portal should be open. Thank you. Singh Gohel. सभापति महोदय, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि लाखों लोगों की भावना को यहां रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मान्यवर, कच्छी भाषा इंडो आर्यन एक ऐसी भाषा है जो कच्छ के अलावा ईस्ट अफ्रीका के केन्या, कोंगो, साउथ अफ्रीका के कई देश, इंग्लैंड, अमेरिका और देश के कई शहरों में जहां कच्छी लोग जाके बसे हैं, वहां कच्छी भाषा बोली जाती है। मान्यवर, कच्छ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या एरिया है जिसका 45,674 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। देश के किसी राज्य छोटे देख लो तो उससे भी बड़ा ये एरिया है, और ये ऐसा कच्छ एरिया है कि जहां जो सबसे बड़ी 5 हड़प्पन संस्कृति आई हुई है वो धौलावीरा वहां पे आया हुआ है। व्हाइट रण देखने के लिए, हम व्हाइट डेजर्ट देखने के लिए वहां जाते हैं। मान्यवर, ये कच्छ के लोगों की भावना को देखते हुए जो संविधान की 8वीं सूची में कच्छी भाषा को इंक्लूड किया जाए, ये बात बार बार कच्छ के लोगों ने रखी है। मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की 8वीं सूची में कच्छी भाषा को ऐड किया जाए। धन्यवाद। 2 शब्द कच्छी भाषा में बोलिए जी। 2 शब्द बोलिए कच्छी भाषा। किए आयो? That's we say that how are you? किए आयो? That's a कच्छी लैंग्वेज, एंड कच्छी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भी मान्यवर कच्छी भाषा की स्क्रिप्ट भी डेवलप हुई है। ठीक है, मजा में। प्लीज श्री डॉक्टर Santanu Sen. Good morning, one and all. I would like to raise an issue of, sir, I am from Lok Sabha. I would like to raise an issue of immense international importance. Sir, as a COVID warrior, I often search the international data through WHO site. On 30th of January, while searching the international data through WHO COVID-19.int, I have seen that map of India was showing blue colored, and surprisingly the Jammu and Kashmir was colored separately. When I was clicking on the blue part, it was showing the data of India, but surprisingly when I was clicking the yellow part, it was showing the data of Pakistan. And to my utter surprise, I have noticed that one part of the Jammu and Kashmir was separately colored once again, and when I was clicking that part only, it was showing the data of China. Not only that, I have seen that in that particular map, our state of Arunachal Pradesh has also been demarcated very separately. Sir, I think our government should have been much more vigilant in this particular issue. Especially we have seen when our government is so much proactive in purchasing Pegasus for spying his own cabinet minister and opposition leader like our leader and party general secretary Abhishek Banerjee. Thank you. Sri Jaishankar ji, take note of it. Sri M. Shanmugam. Yes, sir, from Lok Sabha. Where are you? From Lok Sabha, sir. Okay, please. Sir, thank you very much, sir. I am raising the gratuity. Gratuity is the social security scheme and the terminal benefit of the government employees. You can sit and speak also. If you are comfortable standing, I have no problem. Government employees also. The 7th Central Pay Commission has enhanced the ceiling of gratuity 20 lakhs from 1/1/2016 for the government servants. However, in persistent demand from the workers for payment of gratuity on par with the government employees, the Payment of Gratuity Act was modified by issuing notification only on 29th March 2018 that the amount of gratuity shall not exceed 20 lakhs, but it is done prospectively instead of from 1/1/2016. Hence, the workers who retired during the intervening period 27 months and whose eligibility of gratuity is more than
more than 10 lakhs, their gratuity is restricted to 10 lakhs. For earning gratuity of 10 lakhs, the worker should at least drawing salary of 57,777. And for getting 20 lakhs, his salary should be above 1,15,550 per month. Therefore, there will be a very few workers or employees who are entitled for the gratuity ranging between 10 lakhs to 20 lakhs. Therefore, I demand that the ceiling limit of gratuity should be enhanced to 20 lakhs during the intervening period of January 2016 to March 2018. Okay. It would also not impinge in the finance of the companies, since there will be a very few people left. Even some employers are also ready to pay enhanced gratuity as they will get the tax relief, but since the ceiling has been fixed, they are not able to do so. Hence, I request Honorable Minister of the Labour to take initiative by notifying the provisions of the intervening period also. Thank you, sir. Nandri. Sri Adamaram Karim. Respected Chairman, I would like to raise an important issue related to the state of Kerala. Kerala has proposed a semi-high-speed rail corridor from Thiruvananthapuram to Kasaragod called the Silver Line. This double-line rail will connect both ends of Kerala within 4 hours. The present duration of transport is 10 to 12 hours. Trains can run with maximum operational speed of 200 kilometers per hour, carrying around 80,000 passengers per day. Feasibility study of the project was conducted in 2019, and Railway Board has issued in principle approval for the project on 17/12/2019. Detailed project report of Silver Line was submitted to the Ministry of Railways in June 2019. So preparatory work for land acquisition is going on. Silver Line is a green transportation. It will be reducing more than 2.8 lakh tons of carbon dioxide per day. Right. It will create more than 50,000 direct and indirect employment during the construction phase and 11,000 direct and indirect employment during the operational phase. So I request through you, sir, immediate the permission. No intervention. Let me complete, sir. Let me complete, sir. Nothing wrong. Everyone has got a right to have their opinion. Yes. Sir, I have not completed, sir. No, I request the government to give permission immediately. That is my request. Sir, without the feasibility study, without the environmental impact study, if the government of Kerala is bulldozing this project, entire people of Kerala is against this project, sir. Please. I will. Please. Let there be no controversy in the House. Let the government study this. Let the government study this proposal in all its pros and cons and take a final view. Yeah, please. Right. No, please. Okay. Sri B. Denge Yadav, please. ऐसा बिना permission बोलना नहीं. Thank you, sir. Chairman, sir. तो बिना परमिशन गए तो हाई स्पीड है इसलिए थोड़ा क्रश करेगा थोड़ा. Thank you, Chairman, sir. लिंगయ్య Namaskaram, sir. ప్లీజ్ నమస్కారం తెలుగు. Sir, conducting of census for the persons belonging to OBC in the country, sir. ये మొత్తం భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఓబీసీలు వెనకబడ్డటువంటి కులాల వాళ్ళు 70% దాకా 60% దాకా ఉన్నారని లెక్కలు ఉన్నాయి సార్. ఈ నేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ రోజు చర్చల్లో ఆనాటి హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కూడా సభలో స్పష్టంగా బీసీ కులాల యొక్క జనాభా లెక్కలు చేపడతామని చెప్పి ఆగస్టు 31, 2018లో వారు చెప్పినారు సార్. బీసీ జనగణన కోసం రోడ్ మ్యాప్ కూడా తయారు చేస్తున్నామని చెప్పి ఆ రోజు వారు ప్రకటన చేయడం జరిగింది సార్. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రకటన లేదు. ఇటీవల కేంద్రం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి అఫిడవిట్ లో బీసీ జనగణన చేయటం సాధ్యం కాదు అన్నదని చెప్పి అది ఒక సాకుతోటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఓబీసీలకు వర్గీకరణ జరపడం లేదని మా ఆలోచన సార్. మరి గతంలో బ్రిటిష్ పాలకులు ఉన్నప్పుడు నిర్వహించిందే తప్ప ఈ జనగణన ఈ యొక్క లెక్కలు ఈ స్వతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల్లో ఈ ఓబీసీల యొక్క మరి జనాభా లెక్కలు చేయకపోవటం ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనం సార్.
తమ ద్వారా నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ దేశంలో జంతువులకు కూడా లెక్కలు కడుతున్నారు, ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయని చెప్పి. కానీ ఓబీసీలు ఎంతమంది ఉన్నారని లెక్కలు కట్టకపోవడం దురదృష్టం సార్. అందుకని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఇప్పటికీ తమిళనాడు, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేసింది సార్. ఈ ఓబీసీల లెక్కలు జరగడం వల్ల ఓబీసీ విద్యార్థులకు, ఉద్యోగస్తులకు అన్యాయం జరుగుతుంది సార్. తమరి ద్వారా భారతదేశం అంతా కూడా ఈ ఓబీసీల యొక్క జనాభా లెక్కలు చేపట్టాలని సభ ద్వారా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన తమను కోరుతున్నాను. Demand to conduct OBC census in country. Those K Money, whoever want to associate, send their names. Those K Money. Where are your money? Please, for gallery 4. So the plight of the rubber farmers who are See the mic, other mic, next one. Mic to Mr. Those Money. No, go to the other mic. There's some. Right. Yeah. Now you are on the right side. Okay. The plight of the rubber farmers, who are the backbone of Kerala economy, is in distress and in pathetic conditions, sir. Mainly because of the import of natural rubber and in falling price of natural rubber, and also add to this the COVID pandemic, sir. Add to this, the government of India has decided to repeal the 1947 Rubber Act to enactment of Rubber Promotion and Development Bill 2022, to which they were published a draft in the website and the domain, which was released on January 10th, and for the suggestions and comments from the public and also from the stakeholders till January 21st. So going through the bill, it is learned that it's detrimental to the farmers. This is similar thing is done for the Spices Board Act also the same period. Both these spices and the rubber farmers, if you go through the draft, is detrimental to the farmers. And as you know, the rubber board was established to assist the farmers, and actually the powers of the rubber board is taken away and no support has been given to the farmers. So my request to the government of India is, number one, that the draft which is established, at least published in the website, only minimum time of only 12 days being given, no publicity was given. So please extend the time from today onward for 30 days, and publicity should be given for the public to give the comments. Second, the government of in the bill, the rubber and the spices should be declared as a agricultural produce, and a mechanism should be drafted by the board, both by the Spices Board and the Rubber Board, the cost of production every 2 years. Accordingly, a minimum support price should be established. Thank you, Joseph. Subhash Chandra Singh. Whoever is associating, send the name. Slip. Chairman, sir, ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ହାଉସ୍ ରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ କେନ୍ଦୁଲିପି ୱାର୍କର 10 ଲକ୍ଷ ୱାର୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ୟୁରଲି ଟ୍ରାଇବାଲ and AC worker जो 80% women worker अच्छी सर से GST सर 18% हो 5% आगुरी थिला से 200 कोटी टंका ओडिशा सरकार लूज करछि प्रति वर्ष GST जरिया रे तांकर दैनिक मजूरी सर 200 टंका लेखा बढ़ी पारंता केंद्र सरकार GST फाइनेंस ऑनरेबल मिनिस्टर शुड कंसीडर जे केंदुली वर्कर नॉट ओनली कन्फाइंड इन ओडिशा सर पड़ोसी राज्य सर मध्य प्रदेश हो कि छत्तीसगढ़ हो सर ए सब राज्य मध्य संपृक्त अछि ताको विचार को निया जाई तुरंत GST रिडक्शन करा जाऊ सेही भली भाबरे एप्लीकेशन ऑफ GST इंक्रीजेस द सेल्स प्राइस ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट ओडिशा पृथ्वी रे परिचय होची हैंडलूम रे एवं ता जा को जाए संबलपुरी साड़ी तार प्रोडक्ट रे तापरे एपरी GST बसची सेल्स एवं सब प्रोडक्ट परे सूता परे रंग परे एवं अठा परे ताकू विचार करा जाऊ 2 3 नंबर होची ऑयल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कंसीडर इंट्रोड्यूसिंग डिग्री कोर्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट बरगढ़
बरगढ़ रे सार गोटे डिप्लोमा कोर्स अच्छी ताकू डिग्री कोर्स रे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरगढ़ को डिग्री कॉलेज रे मान्यता दिया जाऊ ये तीनटा विचार को नापे आपन जरिया रे मो विनम्र निवेदन करछि ओडिसा रो बड़ परिचय होछि हैंडलूम एवं संबलपुरी एवं केंदुली वर्कर मान को समाज को विचार को निया जाऊ अपने अपन मातृभाषा उत्तम कह दे he was advocating that GST should not be there on Tenduli's collection. Okay. Dr. Vikas Mahatme. थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं जिसको सिन गुड्स कहते हैं, जैसे कि शराब है, अल्कोहल या टोबैको, तो 2019 एम्स की स्टडी है, उसमें शराब का जो 14.6% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस टेकिंग यूजिंग अल्कोहल का सेवन करते हैं, वैसे ही 27 करोड़ लोग तंबाकू का भी सेवन कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। सभी सरकारें इसके खिलाफ, यानी ये संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए काम करती है, लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। हाल ही में ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ये जो टैक्स कलेक्ट होता है इस सीन गुड से, तो हाल ही में ये बढ़ना चाहिए टैक्स कलेक्शन। इसलिए दिल्ली और महाराष्ट्र में शराब लीकर जो है, इसके लिए कुछ खास उपाय योजना की है। जैसे शराब घर घर तक के होम डिलीवरी की जाए, वैसे ही हाल में महाराष्ट्र में लीकर मॉल्स में अवेलेबल होगी, वैसे 1000 स्क्वायर फीट शॉप्स में भी अवेलेबल होगी, ये बताया गया है। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम कहते हैं कि शराब से एडिक्शन होता है लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू द टैक्स कलेक्शन अमाउंट बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि जो शराब अवेलेबल है मॉल्स में वगैरह, तो उसकी वजह से ये मॉल्स में अवेलेबल कर रहे हैं, तो इसके बजाय ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको वो यदि शराब कम करने के लिए, उसका एडिक्शन कम करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, जनजागृति के लिए और साइकोलॉजी मनोविकास के लिए खर्चा करे, तो इसका यूज कम होगा। और कितने परसेंट से लोगों का यूज कम हो रहा है इसके ऊपर। राइट महात्मा जी, राइट महात्मा जी, क्या प्रियंका जी? It is incorrect. Right. You spoke Okay. about the state of Maharashtra, sir. Okay. Shri Dr. L. Hanumantaya. Dr. L. Hanumantaya, please. Yes, sir. Sir, the University Grants Commission has outsourced the examination of regional languages to National Testing Agency. Sir, very recently on 26/12/2021, the National Testing Agency conducted the examination of Kannada to become eligible for lecturers in Karnataka, sir. Sir, out of 100 questions, only 10 questions were in Kannada and 90 questions were in Hindi. So all the students they were not happy with that, they complained against that. Sir, after some time, they uploaded one more question paper where that was also not correct. Sir, the system, it was online examination, sir. The system did not going well. They could not even log in, all the students. Some students could log in, some students could not do that. And afterwards, sir, even 90 questions were not in Kannada and they did not answer. So it was not complete. The examiner said, you can go home, it will be completed. Sir, after the result, the problem is, all these questions which were not able to log in came as not completed. And some questions which was log in and answered also came as not completed. So, sir, the students, they have to apply for correction. They have to pay 1,000 rupees per question, sir. Sir, how the poor students who are not even employed,
can apply. Right. 50 students, 50,000. Not one, Please, sir, 50,000. let us do justice And to the issue. I request the government. Let us do justice to the issue. Sir, Please, 1 minute. Sir, please I let request him. the government. I have not permitted you. 1 minute, sir. Sir, I request the government to cancel this examination and Who is the minister? MOS is there? So they please, you want solution or you want just? So he raised an issue important. I am asking the minister to look into that. Minister stood up. So let him get it examined and then get back. Sure. Huh? Sure. Right. Then Dr. Rami Agnik. Time. Thank you, sir. I would like to raise a very important issue regarding malnutrition among children, sir. I would request the Honorable Minister for Women and Child Development to look at the data. They have estimated about 70.76 lakh children under the SAM, that is severely acute malnourishment, and almost about 15.76 lakh children under the moderate acute nourishment. But sir, the minister should take into consideration children are the most neglected section of society. Thank you, Food system has done injustice to them. Thank you, Ma. Honorable members, I have two observations to make. One is that Sri K.C. Venugopal and two more members have given a notice of privilege against the IT minister. I am examining it. Once I examine, I will ask once I examine it, then I have to seek the clarification of the minister. Then we'll get back to you, Venugopalji. The second observation is, it was brought to my notice that time allocation has been done by this Business Advisory Committee, 12 hours and 11 hours. So now once the time is allocated, parties have been informed about the time. And the respective parties have been told to give names accordingly, and also, if possible, mark the time they want to give each member. But I am told that they have sent it, but they are not following it. The problem will be if some speakers take more time and then leaves less time to their colleagues, there will be a practical problem. I don't want to name any party. I request all the leaders, please see to it that whatever time you allocated, you people have allocated, please see to it that it is followed by one and all. Now the question hour. Question hour, Sri Brijlalji, question 16. Brijlal. Question number 16. Shri Brijlal ji. Question number 16, sir. Question number 16. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर फर्स्ट सप्लीमेंट्री। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना के अंतर्गत देश में कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें कितना बजट आवंटित किया गया? महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को ये अवगत कराना चाहूंगा कि 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से जिस तरह से हर एक क्षेत्र में उन्होंने विकास के लिए निरंतर प्रयास किया, बिल्कुल वैसे ही खेल क्षेत्र में भी और कैसे खेल को बढ़ावा दिया जाए और विश्व पटल पर और कैसे भारत का चित्र को और उज्जवल किया जाए, इसका निरंतर प्रयास उन्होंने करता रहा। और उसीलिए 2014 में ही टारगेट ओलंपिक पोडियम का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत हर एक खिलाड़ियों को, जो भारत की एलिट एथलीट है, उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा दिया गया। और 2014 से बाद हम लोगों ने देखा कि खेल क्षेत्र में कैसा निरंतर एक पॉजिटिविटी आया और उसमें कितना परिवर्तन आया। और उसका परिणाम का स्वरूप महोदय हम लोगों ने देखा कि जब 2020 और 21 में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहे थे, भारत भी उस समय
कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हर एक एलिट एथलीट को हर प्रकार की सुविधा दिया गया और उसके तहत उसका परिणाम के स्वरूप हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में उनका उत्तम प्रदर्शन से भारत की जो झंडा है उसको विश्व पटल पर ऊंचा लहराया और एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान स्थापित किया। महोदय, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता है उसका ही फल है। प्लीज माननीय मंत्री जी सवाल पूछने वालों से और उत्तर देने वाले माननीय मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि कृपया ब्रीफ हो, दूसरों को भी मौका दें। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि और सीट पर बैठकर ना बोले प्लीज, सीट पर बैठकर ना बोले प्लीज। टॉप स्कीम के तहत नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। महोदय, अभी तक टॉप स्कीम के तहत लगभग 452 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। महोदय, अभी तक 198 एलिट खिलाड़ी जिसमें पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के लगभग 36 जो खिलाड़ी हैं उनको शामिल किया गया है और उनको टॉप के कोर जो स्कीम है उनमें ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है और 254 अपकमिंग बेस्ट जो एथलीट है उनको डेवलपमेंट स्कीम में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कस्टमाइज ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। महोदय, माननीय सांसद जी ने पूछा कि इसका क्या बजट होता है। इसका कोई भी बजट का लिमिट नहीं होता है। कोई भी खिलाड़ी के लिए उनका उत्तम प्रदर्शन के लिए जितना बजट की प्रयोजन होता है उतना इसमें आवंटित किए जाते। महोदय, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सर कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से विकसित कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इसमें जवाब चाहना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय आदरणीय सांसद जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने मेरठ, लखनऊ, सोनभद्र, प्रतापगढ़, महाराजगंज, एटा, फर्रुखाबाद, सदर आदि मिलाकर कुल 24 जो है मल्टीपर्पज हॉल लगभग 125 करोड़ की लागत राशि से खेलों की बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। महोदय, और उसके साथ साथ महोदय वाराणसी में 2, सहारनपुर में और मुजफ्फर मिलाकर 4 सिंथेटिक ट्रैक एवं मेरठ में 1 हॉकी एस्ट्रोट्रैक का निर्माण कुल 28 करोड़ की लागत राशि से भी तैयार किया गया है। लखनऊ में 1 रेसलिंग हॉल, स्पोर्ट्स हॉस्टल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुल 31 प्रोजेक्ट खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत किया जा रहे हैं। थैंक यू। माननीय स्वपन दास गुप्ता जी, प्लीज। Sir, through you, I'd like to ask the Honourable Minister, MOS Sports, draw his attention to a very curious phenomena that while India has been doing exceptionally well and gaining medals in the realm of competitive sports, particularly in the Northeast and Assam, it's curious that the medal tally sometimes stops at the borders of Assam. Now, he is a Member of Parliament for Kuch Bihar, which is a bordering state of Bengal, which is bordering state of Assam. I would like to ask him why the facilities which were there for the Northeast somehow doesn't get translated further eastwards, despite the fact that it is alleged that the state government gives generous grants to youth clubs. Are these for sports, and are you complementing their efforts? This is the question I'd like to ask. Thank you. माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर एक जो क्षेत्र है, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर एक क्षेत्र में खेल के विकास के लिए उनका जो सोच है
और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने 2021 का अक्टूबर में एक वर्चुअल मीटिंग रखा था जिसमें सारे प्रदेशों की जो खेल मंत्री है उनके पास से सुझाव मांगा गया था कि किस तरह से हम आपकी प्रदेश में आपका सुझाव क्या है और प्रपोजल भी क्या है, किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे जाके खेल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। महोदय, इसमें लगभग सारे जो स्टेट्स है, सारे राज्यों ने अपना अपना जो प्रपोजल है, अपना अपना जो सुझाव है वो खेल मंत्रालय को दिया है। लेकिन महोदय, दुख की बात यह है कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अभी तक कोई भी प्रकार का प्रपोजल अभी तक नहीं आया है। महोदय, अगर आएगा तो इस पर विचार करें। थैंक यू। श्री सुजीत कुमार जी। Sir, in 2019, the government had sanctioned 110 crore to set up the National Center for Sports Science and Research. And the objective was to promote scientific methodology in the development and enhancement of sports infrastructure in the country. Sir, I would like the Honourable Minister to apprise the House what is the status of this institution and by when is it likely to be completed. Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उसके लिए मंत्रालय काम चल रहा है इसका और उसके लिए उचित समय पर विचार महोदय किया जाएगा। डॉक्टर वी शिवदासन। Improve the infrastructure facilities in educational institutions in rural area. Whether government has any concrete plan to improve sports infrastructure facilities in educational institutions in rural India? Thank you. महोदय, ऐसी बहुत सारी जो है कि खेलो इंडिया के तहत हम लोगों का विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल का विकास करने के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारा स्कीम है जिससे विद्यालय का भी जो खेल परिवेश है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17, ऑनरेबल श्री एमबी श्रेयांश कुमार प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। Thank you. First supplementary. Mike, Shreyansh Kumar ji, Mike, please see lobby number 4. Yes, it's working. So thank you. Please speak. So how many Gulf Indian workers benefited from the Indian mission? So Indian mission consulted efforts for settling the pending salaries and allowances of expatriates who had returned home due to COVID pandemic situations. So we don't have exact number of exact figure for the workers whose salaries are pending, but I wish to assure the member through you that today retaining employment, ensuring that wages are paid, ensuring welfare of workers, these have been very much the priority of our missions in the Gulf. From the highest level we have been engaged on this matter and we have been regularly talking to the governments of the Gulf at my level and at the ambassador's level. Thank you. Second supplementary. Sir, to a specific question about the representation from Kerala state, nothing has been mentioned. But sir, how much of Indian mission abroad spent during the last 2 years to assist and facilitate the non-resident Indians who suffer in foreign countries due to COVID situation? Indian Community Welfare Fund, during the COVID period, we spent 45.78 crores for the welfare of our citizens, mostly workers in the Gulf, during this period of the COVID. Honorable KJ Alphonse. Kerala survives on remittances from our workers abroad, and I think over 25% of entire remittance to India, foreign exchange remittance to India also comes from Kerala. So we have over 500,000 Keralaites have come back. Now, I don't find it feasible for the government of Kerala to rehabilitate these people because there are no employment opportunities in Kerala. I would like to know from the Honourable Minister,
What is the steps taken by the government of India to get these people back to those countries so that they can get back to job? Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member that we have engaged the governments of the Gulf. This engagement is led by the Prime Minister himself. In the course of the last 2 years, during the COVID period, Prime Minister has had 16 telephonic conversations with his counterparts, the leaders of the Gulf countries. I have visited the Gulf countries 13 times during this period. My colleague Muralidharan ji has been there 4 times. I have also had 27 telephonic meetings with our colleagues. Our objective is to get as many workers back there as possible, as many of them back in their old jobs. We have in Dubai also started an upskilling center for workers, and we are all the missions treat the welfare of workers as their #1 priority. Thank you. Honorable Elam Karim ji. Whether the government may bring a scheme for providing financial assistance to the families of deceased NRIs on abroad due to COVID? So we have a provision in the Indian Community Welfare Fund for responding immediately to situations, especially unfortunate situations like the passing away of people, which this usage of ICWF was expanded in 2017, and it has been a very useful mechanism for dealing with that. We have also encouraged in the Gulf countries, wherever we have had such unfortunate occurrences, for ex gratia payments to be made by the government or by the employers. Thank you. Sri Vinay Vishwamji. Sir, I may ask the Minister that whether there is a proposal or there is a possibility to see that somebody in the Indian missions abroad, in Gulf countries mainly, with Malayalam knowledge, be appointed to interact with the Malayali workers there, because there are large numbers. They face a lot of problems. They know only Malayalam, and their issues are so severe. Please question briefly. My question is that there should be somebody in all missions in Gulf countries who can treat these poor Malayali workers with Malayalam language. It's a suggestion. Yes. Minister. Whether they can do it or not. Please. Sir, first of all, I would like to underline to the honourable member that we have workers from many states. I do appreciate that a very large number of them are from Kerala, but there are workers from other states as well. In terms of what are the language skills of our staff, I cannot give him the exact number, but I can assure him that this common sense point that our employees, somewhere in an embassy, there should be employees who have knowledge of Malayalam. That is a point that has not escaped us, and we do find ways of dealing with that. Thank you. Question number 18, Honorable Sri John Brittas. Please. Sri John Brittas, not present. Mr. John Brittas? No. Minister? Honorable Minister? It is laid on the table of the House. First supplementary, Sri Prasanna Acharya ji. Sir, though it is a question regarding the appointment of women judges, my supplementary is regarding the total vacancies that is now prevailing in different high courts and Supreme Court in the country, and how many recommendations have already been made by the Collegium, and that is pending with the government, and in spite of the recommendation of the Collegium, judges are not being appointed. And sir, I think India is the only democratic country where the people's representatives decide their own salary. Of course, now the MP salary system has been changed, and the judges appoint their own successor. So, is the government considering to again bring any amendment in the law to suggest an alternative to the collegium system? Thank you, so that there will be transparency. Thank you. You have put 3 questions. Judges. You have put 3 questions. Please. Sir, at this moment, we are very happy that out of the total 34 judges strength in Supreme Court, we have, for the first time, 4 women judges in the Supreme Court.
and 3 women judges were appointed when I took over as the Minister for Law and Justice. Sir, out of total 1,098 judges in the High Courts, we have 83 women judges. I can give more explanation, but I would like to state only one thing, that we have been stressing from time and again. Personally, I have been asking the collegium led by the Chief Justices of the Supreme Court and the High Courts that while recommending the names for the appointment as the judges, preferences may be given to women and backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Please, not allowed. Actually, he has put 3 questions. So Yes, but sir, if you permit, I can ask him to confine to one question, but still I will respond to the last point which he made. Government on its own deliberately never held up any appointment cases. Government has to do due diligence while appointing judges, because while appointing the judges, we have to ensure that he is fit to be a judge in the court. This is very important. And then all the cases which come to us has to follow through a process. Some of the names are with the collegium in the Supreme Court. Some of the names are with the government in different stages. And this is a process, and it's a well-established process as per the memorandum of procedure. And we don't make any delay on our part just because we don't want to make any kind of judgment on our own while appointing the process, but only to look after the issue of appointing only the qualified judges. Thank you. Sri N.R. Elango, please. Coming from the state of Tamil Nadu, I am very happy to know the reply made by the Minister, Honorable Minister, that in Tamil Nadu, out of 75 honorable judges, 13 are women judges, and that's Tamil Nadu. But it is agonizing to see that there are 0 women judges in 5 states. It is also agonizing that most of the time the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes persons, though very eminent, are deprived of their elevation. Apart from the reply that they are requesting... Please question. Apart from the question is, apart from requesting the High Courts, what are all the concrete steps are being taken by the government to ensure that there are due representation by these classes? That's a question. Sir, I have partially mentioned in my earlier statement, there are no provisions of reservations for the appointment of judges in the judiciary. But still we keep insisting that while we are talking about appointing quality judges, at the same time, we have to also ensure that preferences are given for the appointment of women judges as well as people belonging to backward classes, including scheduled castes and scheduled tribes. Sri Ramnath Thakur, लोकसभा बैठकर बोले. रामनाथ जी. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट में महिलाओं और पिछड़े वर्ग और दलित लोगों की जज की संख्या कितनी है? सर, मेरे पास पूरा देश का फिगर है और मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं पटना के लिए। पटना हाई कोर्ट का सर टोटल अप्रूव जो जजेस का स्ट्रेंथ है 53 है, 53, और इस वक्त वहां कोई वुमेन जजेस नहीं है। ये थोड़ा से दुख की बात है, इसलिए हमने वहां के चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा है कि जो अगले नाम आएंगे पटना हाई कोर्ट से, तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ा दिया जाए ताकि सरकार को वुमेन जजेस को अपॉइंट करने में मदद मिले। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 19, श्री राम सकल जी। क्वेश्चन नंबर 19, माननीय मंत्री जी। मास्क उतार लीजिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय राम सकल। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में उत्तर में कहा है कि वर्तमान आकलन में पिछले आकलन अर्थात ISF 2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 1440 वर्ग किलोमीटर वृक्षारोपण
और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर वन तथा वृक्षारोपण को मिलाकर 2,261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्शाई गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये आंकड़े पेपर तक सीमित, और जिस प्रकार से सरकार का करोड़ों रुपया लगा करके, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश में, खासकर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मिर्जापुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला मिर्जापुर वन कैमूर क्षेत्र जीव आता है। वहां भारत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वर्ष 16-17 सवाल संक्षिप्त और आराम से करिए प्लीज। करोड़ों रुपए लगा करके 200 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण पौधारोपण कराया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से वहां के आदिवासी समाज के द्वारा SC/ST के पास पूरी जमीन जो वृक्षारोपण हुआ था वो कब्जा कर लिया गया। स्थानीय अधिकारी मिली भगत, मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, कितना पैसा लगाकर जो वृक्षारोपण होता है उसके रखरखाव के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बढ़िया। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सवाल है, भारत में हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं, और जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके जहां पर भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा वृक्षारोपण है उसको इसके अंतर्गत अंकित किया जाता है और देश के फॉरेस्ट कवर का पूरी तरीके से मापन किया जाता है। और दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया के जो बढ़ने की बात है वो तथ्यों पे आधारित है, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। जहां तक जो माननीय सदस्य ने मूल विषय उठाया है कि कुछ जंगली क्षेत्रों से पेड़ के कटने का या कुछ जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के सफल नहीं होने का, मंत्रालय द्वारा उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी और बाकी पॉलिसी, राम शक्ल जी प्लीज आप बैठे पॉलिसी के माध्यम से एक संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। जहां तक आप कब्जा करने की बात कह रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ग्रीन वॉच पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। उसमें जितनी भी अंकित शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई विषय है तो आप संज्ञान में लाइए, निश्चित रूप से हम उस पर कदम उठाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री और ब्रीफली संक्षेप में पूछे। अभी आप जो आपने आंकड़े दिया 4-5 स्टेट का दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है इसमें। पूछे क्वेश्चन तो। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सभी राज्यों का विश्लेषण, सभी राज्यों में जो फॉरेस्ट बढ़े हैं या जहां पे फॉरेस्ट कम हुए हैं उसको पूरी तरीके से रखा गया है। फॉरेस्ट जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो राज्यों के अंतर्गत होता है और इसलिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको संभालता है। आपका कोई उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर स्पेसिफिक विषय है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री GC चंद्रशेखर जी। Sir, this is very important question. In Karnataka, Salumarada Timmaka, a 106-year-old notable environmentalist, Padma Award recipient, an inspiration to many, sir, who planted more than 8,000 trees in 65 years, raised 385 banyan trees on either side of the road between the Hulikal and Kadur to the stretch of 4 kilometers. She had faced health issues and many such people are finding difficulties. If there is any provision from the ministry to support such environmental activists. मंत्रालय के द्वारा पूर्व में भी एक लंबे समय से इको क्लब से लेकर अनेक पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा इस बात का विचार किया जा रहा है कि सभी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे विभिन्न स्कीमों के चलने के कारण कई बार एक व्यापक रूप से जो दृष्टिकोण है वो नहीं आ पाता है। लेकिन हम मंत्रालय के द्वारा भविष्य में भी ग्रीन इंडिया मिशन में सभी स्कीमों के कन्वर्जेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि संयुक्त रूप से इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन और जो लोग भी वृक्ष लगाने में सहायता देते हैं उनकी मदद ली जाए। मैं सांसदों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वृक्षारोपण ये हमारी आवश्यकता है, आपका भी सक्रिय सहयोग मिलेगा तो ये देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद मंत्री जी। डॉक्टर फौजिया खान जी, डॉक्टर फौजिया खान प्लीज। From Lok Sabha. हाँ प्लीज। Chairman sir,
in the reply to the question, it is said that the forest cover in India is 24.62%, when ideally it should be 33%, it is said. And the major expenditure heads, including the National Plan on agroforestry research, afforestation board, forest management, etc., have suffered a decline in this year's budget, sir. You have to put only one question, madam, and you have already put it. Please. No, I want to say that since the budget has declined, how is forest conservation going to be the essential part of the program for climate change? Since, sir, this has to be an integrated interdepartmental effort. Thank you. So what is the government going Thank to you, do? madam. You have to be brief. Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे फॉरेस्ट एरिया के कवर का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर 3 तरह का फॉरेस्ट है। एक सघन वन है, एक मॉडरेट है और एक नॉर्मल जो वन है वो हमारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हमारे को देश का जो ट्री कवर है जो 30% बढ़ाने का हमारा दुनिया के सामने भी लक्ष्य है, 33% करने का, उसका एक सबसे बड़ा समाधान है कि हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण और ट्री कवर की संख्या को और स्थिति को बढ़ाया जाए। जहां तक भारत में फॉरेस्ट की स्थिति का बात है, भारत में जो सघन वन है, हमारे फॉरेस्ट के अलग अलग तरह के प्रकार हैं। कहीं पर हमारे जो पर्यावरणीय और भौगोलिक अलग अलग विशेषता है, उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश के अंतर्गत है। सरकार के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से संरक्षित करने का, बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में फॉरेस्ट के अंतर्गत 52 हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जिसमें से आज भारत सरकार के सघन प्रयासों के कारण, पिछले 7 वर्षों के प्रयासों के कारण हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को उनकी अच्छी स्थिति के कारण इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी प्राप्त हुआ है और अभी दक्षिण के एक हमारे टाइगर रिजर्व को TY2 का भी दर्जा मिला है। लेकिन इन फॉरेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के कवर एरिया को बढ़ाने के लिए जो जल के जो हमारे क्षेत्र है, उनके आसपास भी सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष रूप से नर्मदा और उसके क्षेत्रों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान ले रही है और संज्ञान लेके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। श्री विकास महात्मे जी। सर, मेरा सवाल ये है कि वी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस and how this revenue can be increased, and this is without decreasing the forest cover, so that forest cover remains but we get revenue from the forest. सर, माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके कारण जनजाति समाज के जो हमारे बंधु हैं, उन जनजाति समाज के बंधुओं की आय होती है। इसके लिए विभिन्न स्कीम और योजनाएं भी चलाते हैं और मैं यहाँ पर सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की पूरी तरह की प्रतिबद्धता है कि फॉरेस्ट बिना वहाँ के जो हमारे जनजाति बंधु हैं, उनके जीवन में उत्थान करे बिना हम फॉरेस्ट कवर को नहीं बचा सकते। सरकार माइनर फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस स्कीम को, जो जनजाति समाज का हमारा जनजाति मंत्रालय है और जिनके फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उनके साथ मिलकर पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा है। उनके जीवन, सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑनरेबल त्रिचू शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 20, सर। माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, while appreciating the well-informed, learned minister for the initiatives he had taken to reduce the impact of the air pollution on health and the measures taken for air quality management, I would like to know from him, sir, the ministry has introduced a new star rating system to the State Environment Impact Assessment Authority for granting speedy environmental clearances and has placed high points for fast acceptance of proposals and penalties for the SIEAs which ask for additional documents. If the SIA asks for additional documents, penalty is imposed. I would like to know, sir, whether the ministry is aware of the negative impact this can have on giving out inadequately assessed environmental clearances. Thank you.
मेरे विद्वान साथी बहुत अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हैं। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न के संबंध में नहीं है। प्रश्न जो उन्होंने मेरे से पूछा है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हेल्थ सिस्टम के बारे में है, लेकिन ये जो प्रश्न मेरे से कर रहे हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है, जो मंत्रालय की एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी मैं उत्तर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने पूछा है कि हाँ, मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दी जाती है उसकी स्टार रेटिंग किस प्रकार से की जाए। ये हमारी तरफ से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए, एक निष्पक्ष तरीके से जो भी एप्लीकेशन आती है उनका मूल्यांकन किया जाए, ताकि जो भी निवेश के लिए लोग आते हैं उनको सुविधाजनक तरीके से हो जाए। इस सर्कुलर में किसी भी प्रकार से नहीं कहा गया है कि कोई रिलैक्सेशन किया जाए, लेकिन त्वरित एप्लीकेशन का निस्तारण करना, एप्लीकेशन को अनावश्यक न हटाना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आवश्यक है। दोनों ही बातों की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक का पालन करते हुए फॉरेस्ट क्षेत्र में क्लियरेंस देते समय जो पूरे नियम हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। इसलिए इसको स्टार रेटिंग का दर्जा दिया गया है, ताकि विभिन्न राज्य अपने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार करके निवेश को भी बढ़ा सके और फॉरेस्ट को भी बचा सके। इस निष्पक्षता के लिए इसको किया गया है। ये मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसका उत्तर देता हूं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट। Sir, thank you, sir. My question is about air pollution, the impact of air pollution. Because of inadequate clearances, it may cause air pollution. That was the intention of my first supplement. Second is the amendment in the agreement to replace the word phase out with phase down. In the UN Climate Change Conference in Glasgow, the ministry pushed for the amendment replacing the word phase out with phase down of unabated coal power. Reasons for the amendments moved, sir. सर, ये प्रश्न फिर मूल प्रश्न से हट करके है। आप कहेंगे तो मैं उत्तर देता हूं। जरूर, अगर आप देना चाहे तो। सर, भारत जलवायु परिवर्तन में जो ग्लासगो में COP26 की वार्ता हुई थी, भारत ने उसमें पूरी दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। जलवायु पर ट्रांसलेशन इज अवेलेबल, प्लीज। जलवायु परिवर्तन का जो COP26 हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत में दुनिया में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो एक प्रिंसिपल लागू किया गया था, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के सारे देशों ने यह तय किया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विभिन्न देश अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपने लक्ष्यों को तय करेंगे। दुनिया में अभी तक जो विकास हुआ है, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन स्पेस विकसित देशों के द्वारा कार्बन स्पेस को घेरा गया है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए भारत ने अपने 50% लक्ष्यों को भी वहां पर घोषित किया है, और भारत ने रिन्यूएबल में 40% के लक्ष्यों को प्राप्त भी किया है। लेकिन जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की ये वार्ता चल रही है, तो उस वार्ता के अंतर्गत भारत ने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन होना चाहिए। इसलिए अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हम फेस आउट नहीं कर सकते। भारत में फेस डाउन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। ये प्रिंसिपल दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वीकार किया है, और उसको भारत के द्वारा रखे गए सारे विषयों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र दिया है, जिस पर दुनिया को आगे बढ़कर हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट के साथ बचा सकते हैं, उसी को पालन करते हुए सब लोगों ने स्वीकार किया कि फेस आउट उचित नहीं है, फेस डाउन के माध्यम से ही विकासशील देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। From our learned minister, how much concerned our government is regarding the following facts. As per the data provided by Yale University Environmental Performance Index,
Out of 180 countries, India ranks 168th. So far the mostly polluted countries are concerned, India ranks 5th in the world. Amongst Asian countries, India ranks 3rd. And unfortunately, out of the most polluted 10 metropolitan cities in the world, India is having 3. And Delhi happens to be the most. I want to know the concern of our government. Thank you. सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहते हैं, उनके क्या मानक विकासशील देशों के अनुरूप है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पॉल्यूशन करके कार्बन स्पेस को घेर रखा है, तो उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या जो है वो दुनिया की 17% है, लेकिन हमारा अगर दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है। दुनिया में जो कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा दुनिया का न्यूनतम है, जो हमारी जीवन पद्धति के कारण है, हमारे विकास के मानकों के कारण है। जहां तक एयर पोल्यूशन का विषय है, हमारी सरकार पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए के समाधान के लिए कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4400 करोड़ रुपया दिया गया, उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की इस वर्ष हम लोगों ने पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में क्षेत्रीय बैठक करी। ओमिक्रॉन के कारण बाकी बैठक रह गई, लेकिन उन बैठकों को भी आगे बढ़ाने का विषय है। जहां तक बड़े शहरों के पॉल्यूशन की बात है, मिटिगेशन के अनेक उपायों को सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खपत जो ईंधन की खपत है उसको भी बदलने का कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों में भी पॉल्यूशन के नए मानक तय किए जा रहे हैं। पराली जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भी सरकार के द्वारा उसका जैव उसको ईंधन में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान बजट में भी सरकार ने जो दिशा दिखाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर देश के विकास करने की दिशा को दिखलाया है। लेकिन फिर भी देश के 132 शहरों में हम लोगों ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन के यंत्र लगाए हैं, और जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें हवा के अंतर्गत जो 12 मानक पाए जाते हैं, जिसमें PM2 से लेकर PM10 से लेकर नाइट्रोजन से लेकर लेड से लेकर जो 12 मानक होते हैं उनकी मात्रा को उसके माध्यम से किया जाता है, और 132 जो शहरों का जो मानक किया जाता है उसके आधार पर ही मंत्रालय के द्वारा उन नगरों को सहायता और उन नगरों को उसके मिटिगेशन के उपायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के भी जो स्वच्छता मिशन से लेकर के अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी एयर पोल्यूशन के लिए काम किया जा रहा है, और आने वाले समय में भी नेशनल क्लीन एयर मिशन को विभिन्न चारों क्षेत्रों में हम लोग रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और हम मंत्रालय ने तय किया है कि जब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सांसदों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे, ताकि वो भी अपने अपने म्यूनिसिपैलिटी और नगरीय क्षेत्र में जो एयर पोल्यूशन के विषय हैं उसके समाधान के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Ask the Honorable Minister, I have seen the detailed reply and what is happening in the cities on the front of mitigation of air pollution. But is there any plan by the government to ask the cities to collect data on their own for the air pollution that is happening in individual cities, so that a central database can be created to see that the mitigation takes effectively? अन्य सदस्य जी का एक अच्छा सुझाव है, लेकिन चूंकि हमें मानक तय करने हैं तो उसका एक समान रूप से उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अलग अलग को स्वायत्त तरीके से देंगे तो सबके मानक को क्रिएट करने के और डाटा क्रिएट करने के अपने अलग अलग तरीके हो जाएंगे। इसलिए हमने 132 शहरों में समान मानक के आधार पर यंत्र स्थापित किए हैं, लेकिन नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज के साथ भी MOU करके कार्य किया जाता है। अभी पश्चिम में भी जब हुआ तो महाराष्ट्र की अनेक म्यूनिसिपैलिटियों के साथ ये जो फाइनेंस कमीशन ने राशि उपलब्ध कराई है, इसका विभिन्न नगर पालिकाओं के साथ MOU किया गया। और हमारा ये मानना है कि एयर पोल्यूशन की समस्या को अगर स्थानीय सुशासन स्तर की जो हमारी संस्थाएं हैं,
केवल एयर पोल्यूशन का कारण केवल धुआं नहीं है, जो कचरा भी है, कचरे का निष्पादन भी एयर पोल्यूशन का कारण है, स्वच्छता भी एयर पोल्यूशन के कारण में आती है, औद्योगिक उत्पादन भी एयर पोल्यूशन में कारण में आता है, डस्ट भी एक एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, व्हीकल भी एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग अपनी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं, उसमें हम महानगर पालिकाओं से ही लोगों को बुला रहे हैं। अब हम सांसदों को भी बुलाने की योजना कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी, लोकसभा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में वहां पर लगातार रेडिएशन के कारण वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं और साथ साथ में लगभग कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। साथ साथ कई वहां के लोगों को कैंसर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल करिए दीपक जी, सवाल। ये जलीय प्रदूषण, रेडिएशन के यूरेनियम के खान के कारण जलीय प्रदूषण हुआ है और जिसके निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? माननीय सदस्य महोदय ने एक झारखंड के विशेष क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सभापति जी उनको उत्तर में, लिखित उत्तर में मैं तथ्यों का पता लगा करके उनको जवाब दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21, श्री वेंकट रमणा राव मोपी देवी। Yes, sir. Honorable Minister, first supplementary. Sir. Respected Chairman, sir, I thank you so much for the opportunity given. I would like to bring to the notice of Government of India that and request that since the Andhra Pradesh is blessed with the second largest coastline of 974 kilometers, inland water bodies of 8 lakh hectares and 350 square meters of the mangroves area, there is an enormous scope of establishment of integrated aqua parks, aquarium complexes, oceanaries, sports fishing, tourism boats, water sports for promoting the eco-tourism for employment and income generation of the state. As Please well as be the brief. Our Honorable Chief Minister Y. Jagan Mohan Reddy Garu, under his immaculate leadership, is striving hard for... Please be brief in question. Sir, of employment of the largest extent of the state. The government of India is supporting is the... Venkat Ramana ji, please, this is not 0 hour. Please put your question. Sir, this is sir. Question. What is your question? Sir, whether the government has taken any measures of introducing aqua tourism in the state of Andhra Pradesh. Thank you. Please. उपसभापति जी, माननीय सदस्य को बाकायदा लिखित उत्तर में भी जो जवाब दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि तटवर्ती परिपथ काकीनाडा और नेल्लूर ये दोनों के दोनों लगभग पूर्णता की तरफ हैं और ये पूरे भी हो गए। दूसरा जो बौद्ध परिपथ के तहत सालीहुंडम और बाकी कोंडा बौद्ध परिपथ है, वो भी आंध्र प्रदेश में दिया गया है, वो भी पूरा हुआ है। प्रसाद योजना के तहत भी अमरावती शहर और श्रीशैलम दो बड़ी परियोजना है जिनको पूरा किया गया है। मूलतः पर्यटन के प्रचार प्रसार का काम राज्य सरकार का है। मैं और भी अगर वो चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को और उपयोगिता को देखते हुए पर्यटन का जो महत्व का प्रदेश है उसमें भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वहां पर सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करने का विचार है। Second supplementary, Mr. Rao. Sir, aquaculture could also the income for the coastal communities and especially fishermen communities. Fish flock should be heavily engaged in the aqua tourism projects. Are you reading something or putting your question? So finish, sir. Question. Please. He has no other question. Sri Vijay Sai Reddy ji. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, aqua tourism could be a good source of income for the coastal communities, especially fishing community.
fisher folk should be heavily engaged in aqua tourism projects. Has the minister had any discussions with the Department of Fisheries and also the respective state governments where there is a coastal line to collaborate on promoting the aqua tourism? Thank you, sir. माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रसाद और स्वदेश दर्शन की योजना है वो तटवर्ती परिपथ के तहत ही वहां पर थी, लेकिन जो पर्यटन अवसंरचना की बात माननीय सदस्य ने की है, मैं उनकी जानकारी में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें ही प्रस्ताव भेजती हैं और उसके तहत पुट्टपर्ती में भी लाइट एंड साउंड शो हुआ है, वो प्रस्ताव वो भी पूरा होने की स्थिति में है। और विशाखापट्टनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में भी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं उसके लिए भी लगभग 38 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिए हैं। मैं विचाराधीन एक परियोजना है सिंहाचलम और अन्नावरम, मुझे लगता है कि जो बात मैंने पहले भी कही है कि राज्य सरकारों की सहमति से ही ये प्रस्ताव हमारे पास आते हैं और मैं मानता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में आंध्र में पर्याप्त मात्रा में प्रस्ताव दिए गए हैं। अन्य जो कार्यक्रम होते हैं जलाशय, उन 4 जलों में भी आंध्र प्रदेश में पैसा दिया गया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 22, माननीय श्री संजय राउत जी। माननीय श्री संजय राउत जी, नॉट प्रेजेंट। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, प्रियंका चतुर्वेदी जी। Honorable Chairman, sir. Sir, this is with regards to classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the state government of Maharashtra, many MPs across board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the table in the 253rd session. Every time the response is, it is under active consideration. My only question on this particular topic is, how long will this active consideration last? Thank you. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जैसा कि माननीय सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ठीक है कि मैटर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो है 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था 2004 का, उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25/11/5 को निकला, जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को ऑथराइज किया क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा देने के काम को। इसमें फिर हमने एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में मैटर गया। मैटर बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही निर्णय शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। जैसे ही निर्णय आएगा हम आपके माध्यम से माननीय सदन को, संसद को अवगत करा देंगे। धन्यवाद। माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी। उपसभापति जी, मुझे ये पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर के समन्वय के अभाव में क्या कुछ इस प्रस्ताव में खामियां रही है? ये जानकारी क्या सही है? डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सांसद ने प्रश्न किया है, जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इस काम को जांच रही है। निश्चित रूप से क्या होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो फिर ये मैटर साहित्य अकादमी में गया, तो कुछ कमियां छोटी मोटी रहती भी है, वो दूर कर ली गई है। जैसे कितनी पुरानी लैंग्वेज है मराठी भाषा, क्या क्या साहित्य, 3री शताब्दी में क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी तक क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि मराठा भाषा, मराठा साहित्य, उस पे देश मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर देश गर्व करता है, देश गर्व करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक्टिव कंसिडरेशन का जो प्रकरण पहले जो सांसद ने उठाया, माननीय सांसद ने उठाया, सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्दी शीघ्र निर्णय होने वाला है। माननीय रजनी पटेल जी। पाटिल जी, रजनी पटेल नहीं, पाटिल जी कहिए सर। क्या बोल। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से, एक तो मराठी भाषा जो है उसकी संस्कृति और उसकी इतिहास की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। आद्य कवि मुकुंदराज, उन्होंने ये मराठी भाषा का उगम उनसे हुआ था और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको आगे बढ़ाया था।
हमारे नामदेव संत नामदेव जिन्होंने ये मराठी भाषा पंजाब तक लेके गए। रजनी जी सवाल मैं ये बता रही हूँ, उन्होंने बताया कि हम अभ्यास कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना नहीं, उन्होंने मंत्री महोदय ने बताया, उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको ज्ञान देना चाहती हूँ मराठी भाषा के लिए। नहीं, आप ज्ञान देना चाहती हैं तो अलग है, सवाल पूछना चाहती है तो मैं मौका दे सकता हूँ। ज्ञान बाहर अलग से दे सकती हैं, आप सवाल पूछे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे भाई विनय सहस्त्रबुद्धे बोल रहे हैं, जब वो हर जगह पर राजनीति करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि मराठी भाषा सांस्कृतिक लेवल पे लिया जाए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रयास से इसको जल्द ही किस प्रयास में सांस्कृतिक दर्जा देना चाहती है और उसके लिए क्या करना चाहती है? धन्यवाद। ये हम पूछना चाहते हैं। धन्यवाद। चेयरमैन सर, जो मैंने पहले जिक्र किया कि मराठी भाषा और मराठा साहित्य, मराठा इतिहास, इस पर गर्व है हमें। हम जल्दी ही इस पे निर्णय करने वाले हैं। आप इस पे आप ये शंका मत करिए कि हम जो आप ज्ञान दे रहे हो उससे ज्यादा ज्ञान हम भी रखते हैं। हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इंटर मिनिस्टर कंसल्टेशन होता है डिप्टी चेयरमैन सर, तो उसमें समय लगता है। MHRD का भी संस्कृति मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कई मंत्रालयों के बीच में इंटर मिनिस्टर कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्दी सकारात्मक निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23, श्री रामचंद्र झांगरा जी। माननीय रामचंद्र झांगरा जी नहीं है, अनुपस्थित। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय केसी वेणुगोपाल जी। The government is nowadays taking action against some particular channels on citing these anti-national activities. We are also very much keen about the anti-national activities for some channels is happening. We are also very much concerned about it. But the complaint in the public domain is, sir, the government is misusing this penal code to suppress the freedom of expression in the country, freedom of the press in the country. Recently, one of the channel, Media One, has been given a direction to stop the telecast for the IP by citing the same security issue. Whether they have done anything wrong, we would like to know. Thank you. From the government, we would like to know what is the crime they have done. Thank you. Thank you. Please, no, please. Respected Deputy Chairman, sir, our government is concerned about the freedom of speech and freedom of expression. I want to convey, honourable member, we are not in 1975. We are not in emergency. We are in Brighton period under the BJP government. Please. Sir, I am coming to my answer. Sir, आपको सुनो तो चाहिए. वेणुगोपाल जी, आपको मेरा आंसर तो सुनो. Answer to suno. Take your seat, please. You have to listen my answer. Please take your seat. See, please. Please. Sir. Please. Sir, Venugopal ji. But please. Sir, Venugopal ji's question is that Media One. Sir, that Media One, we are not doing anything. Sir, whatever the channels permission is we are giving under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the Media One is sub judice matter also. I want to convey this. And also, sir, within 2 months, our. Venugopal ji, please take his answer. Sir, please, within 2 please, months, madam, listen, please. Within 2 months, our government initiated actions against 60 channels. Those content, I'm not reading. Those, they content against Nothing the nation. is going on. And content against the integrity of the nation. And content against the safety of the country. So we can't tolerate. We are taking, for example, 60 channels. It is in YouTube channels,
and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. The peace also. That is the thing. Thank you. Lieutenant General D.P. Vats, retired. D.P. Vats from Lok Sabha chamber, sir. Lok Sabha chamber, sir. आप अपना सवाल पूछे. Through you, I will like to ask the Honorable Minister, sir, what about action against the people who come on media and use the filthy language? And the channels which give fake news? I would like to know action only initiated or it culminated into punishment also. Thank you. To convey through this Augustus to the member, again I am telling, we are concerned about the freedom of speech and freedom of expression. See, the Press Council of India is there. Sir, there is three-tier mechanism is there. सीट पर बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा. Three-tier mechanism is there. One is self-regulatory. Then self-regulatory bodies can take. If the grievances is not sorted out, then only inter-department committee is going to take the grievances and we sort out the grievances. In this, I want to tell this, 160 cases we initiated against the TV channels. Time is over, Minister. Now time is over. Please. Now discussion on motion of thanks on the President's address. Honorable Sri Thambi Durai ji, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving the opportunity to speak on the subject. On behalf of ADMK party, I raise to thank the Honorable President's address to the Parliament, which listed the achievements of Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the government led by him, including achievements in the healthcare, infrastructure, defense, farming, startups and others. At the outset, I congratulate the Modi ji government for its successful fight against the COVID-19 pandemic and thank the central government for extending meaningful support to the efforts of all the governments in India. Sir, I want to once again thank our Honorable Prime Minister. When ADMK government was in power, when the first phase of epidemic took place, at that time, government extended a lot of extension to our former Chief Minister Edappadi Palaniswamy, who did marvelous work to tackle the pandemic situation at the time. Sir, at the beginning of the COVID-19 pandemic, we were all thought, don't know what is going to happen. Most of the even developed countries worried how to tackle this issue. But at the time, when the world silence please. Worried about that, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who took quick decisions and firm implementation of the measures in containing the spread of the virus. As Honorable President mentioned in his address, the proof of India's capability to fight against COVID-19 has been witnessed in the vaccination drive. The rupees 64,000 crore Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission is preparing the countries for future healthcare crisis. I should like to make a special mention of the wonderful action taken by the ADMK government in Tamil Nadu under the leadership of Thiru Edappadi Palaniswamy and Thiru O. Pannirselvam to protect the lives and livelihoods of the almost 8 crores of the population of Tamil Nadu at that time, sir. So, ADMK government, during its period, pandemic situation, provided each
cash assistance of rupees 5,500 rupees, provisions and food grains to more than 1.2 crore families for within 8 months, and separate payment of rupees 2,000 to Labour Welfare Board members, weavers, and to several lakh migrant workers. For several months, nutrition food, cooked and prepared, was given free of cost through the hundreds of people through Amma canteens in the major towns in the cities of Tamil Nadu. Medical help was readily made available to millions of COVID-affected people in Tamil Nadu. Excellent treatment was provided to all in the need. Indeed, an exemplary work was in force during the time of ADMK government, headed by Edappadi Palaniswamy, and take the opportunity to thank the central government for the support it provided for us at the time. Sir, we have administered 150 crore vaccines in less than a year. More than 90% of adults have received at least one dose of vaccine, while more than 70% have been fully vaccinated, and the third dose of the vaccine is being administered effectively. I most congratulate our Honorable Prime Minister Modi ji government for this monumental work executed effectively. Sir, India has emerged as a role model for the world in providing health care and affordable medicines to the people through Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ayushman Yojana, and as it has set up 8,000 kendras to provide the poor with affordable medicine. It is very important to note that our country has exported Ayush products worth 11,000 crores to foreign countries. Sir, and also, you know very well, even though we faced a lot of problems, epidemic problem, during the Honorable Prime Minister Narendra Modi period, in 8 months between April and November 2021, foreign direct investment of 48 billion was made in India. Our foreign exchange reserve exceeded 630 billion US dollars. Because of the Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile connectivity, people have benefited from direct cash transfer during the pandemic. More than 44 crore people have joined the bank system. These are all not small achievements. Sir, in the area of agriculture and food distribution, our country has set new records under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Rupees 1.8 lakh crores have been transferred to more than 11 crore farmers' families. More than 1 lakh crore rupees have been paid as compensation to around 8 crore farmers. 6 lakh hectares of land has been developed with irrigation facilities under the various schemes of the central government, and I register my appreciation for these historic achievements, and as I am also the son of the rural small farmer from remote village of Tamil Nadu. The collateral-free loans given to the 13.5 lakh medium, small and micro industries have helped to keep the economy and core sectors production more. The huge emphasis of this government on the development of infrastructure and transport will accelerate overall growth of the country and generate new job opportunity for several lakh workers. So I must especially appreciate this government for rupees 65,000 crores financial through our banks given to 25 lakh women's self-help groups. Sir, in the line with the politics mentioned by our policies, in the line of the policy mentioned by our Honorable President, our Finance Minister, Tirumati Nirmala Sitharaman, has announced Godavari Krishna Pennar and Pennar Kaveri river linking has been finalized. Sir, this proposal of interlinking of rivers to transfer surplus waters from Godavari Krishna Kaveri is a right decision. Our ADMK government has worked hard for it. I thank the central government for accepting our proposal, and I hope the project will be successfully completed in the next few years. Sir, at this juncture,
I draw the attention of the government of India, the plight of the Indian fishermen from Tamil Nadu, from my state, who are continuously harassed, attacked, looted, and brutalized by the Sri Lankan Navy in the Bay of Bengal and the Gulf of Mannar. I plead that our government take a firm policy decision to safeguard the interest of our fishermen and protect the livelihood of lakhs of poor fishermen folks. Sir, you know very well, recently the Sri Lanka government seized the boats of the Tamil Nadu fishermen. They are going to announce they are going to auction it. This is an unfair thing, sir, because our poor fishermen, they have gone and without such knowledge, something would have happened. But I request the central government to take necessary steps to get back the fishing boats of our Tamil fishermen. Sir, and also, sir, this is the only way to settle this issue, you know very well. And the way of stopping the menace could be retrieving the Kachetivu. This is the very thing, sir. You know very well in West Bengal also, when a certain island was given to West Bengal, Bangladesh, at that time it was passed by the parliament. But Kachetivu is not done like that. It is arbitrarily given at that time when Madam Indira Gandhi was the Prime Minister to the Sri Lanka, but not ratified by the Parliament. Therefore, still Kachetivu is the part of Indian territory. Therefore, it is high time to see that we have to fight and get this Kachetivu to solve the fisherman issue. Otherwise, Sri Lanka is now, you know, they are moving towards China. That is the relations going on. It is a threatening for to our Indian security. Therefore, whatever the Chinese government is doing, not only in Arunachal, other places, even Sri Lanka also, they are trying to enter to give threat to our Indian thing. Therefore, it is high time to see that we have to take that action also, sir. Sir, and also, regarding the mentioned governance thing, sir, President address, this is the 150th birth anniversary of Vavu Chidambaram Pillai is going to, and also 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Gopi, they are going to celebrate it properly. I am very thankful for the central government to come forward to the freedom fighter who navigated the ships for a British period. You lost all the life and wealth of Chidambaram Pillai. To honor that, the government has come forward. Appreciate for that, sir. Regarding the NEET examination, sir, this is know very well. We are all raising, especially Tamil Nadu, all the parties, to get the exemption to the NEET examination, because the NEET examination affects our medical students, aspiring medical students, rural people, especially rural students, they are studying there. Sir, as long as education is there in concurrent list, this problem will occur. When it has come, you know very well, 1975, 70, 76, 77 period, emergency period, at that time former Prime Minister Indira Gandhi brought this education from state subject to central concurrent list, brought that at that time. After the government, Morarji Desai government came, Morarji government changed many things, withdrawn the many bills, but the education, that government also allowed to continue concurrent list. Because of that subject is concurrent list, we are tight, central government taking many laws. At the same time, state governments are going down. Therefore, it is high time. I request the government to rethink it, because they announced in the President address, they are going to start nearly 200 channels of giving education for the people, and also they are going to conduct programs like professional courses, like engineering courses in regional languages. When that is the case, when we are going to promote our other languages, which is in the 8th schedule, most of the languages of that 8th schedule, including Tamil, your Bengal, all must be made, Bengal language, all must be made as a national language and an official language of this country. That is our demand. We are going raising that. That has to be done. Then only we get the equal opportunity. And also when you are conducting the all India examination, when you are writing, the state must give them the more power to see that professional admissions, courses admission, such as medical courses, is given more to the state government. That is why our party, ADMK party,
gone requesting many times, meeting the central minister, Honorable Prime Minister, and asking that to help the rural people, especially students. It has, otherwise, what is going to happen now? There are more coaching classes started, professional course started. Lakhs of money that people are paying and to get that kind of education to enter the NEET examination. But poor people cannot do that. That is why we are asking the exemption for that. Therefore, I think the central government consider all these things, sir. And also, our Honorable Prime Minister has mentioned, as in the President address, mentioned Honorable Prime Minister's vision for that the government is moving fast on building a strong foundation for the next 25 years following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, our Sabka Prayas. Sir, creating in India which includes all benefits, all which has to be self-sufficient, sir. These are, I am very happy to note that this, our Prime Minister, Narendra Modi ji, has come forward this kind of vision which is going to help our country. Therefore, I am very thankful for giving the opportunity. And also, once again, I thank the Modi ji government and Modi ji and others and who have taken long kind of steps to see that India is going to develop for that. I thank once again for the President's address. Thank you. Thank you. Shri A.D. Singh ji. Thank you very much, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak. I rise to thank the respected Rashtrapati ji for his very comprehensive listing of the achievements of the present government and the way forward. Indeed, the catalogue and success and achievement are impressive, and I congratulate the Prime Minister and his team for these successes and also the work in progress. This success will be even better if it was accompanied by social cohesion and unity. Unfortunately, the nation's progress is slowed down by divisions that we see emerging in society. This needs immediate course correction. This reminds me of an anecdote from Gandhiji's visit to St. Stephen's College, as reported in the College magazine of 1915. According to this story, a sadhu came to another iconic leader of our freedom struggle, Sri Gopal Krishna Gokhale, to make suggestions that would suppress a minority community. Gokhale rejected this specious religious reasoning by saying that if to be a Hindu he has to do what has been suggested, then he be better known as a non-Hindu. Rashtrapati ji said that the government is committed to counter the forces challenging the sovereignty and unity of the country at every level, and strict action will be taken against the forces inciting violence. I urge the government to inform the House actions that have been taken so far against those who publicly called for genocide and targeting specific communities. The House will support strictest of action against all such individuals, irrespective of their political affiliations. A strong government cannot be seen as cowing down to a handful of fringe elements who are sowing discord in our society on a daily basis. We pay tribute to the 20 brave hearts who made the ultimate sacrifice to defend every inch of our land in June 2020. But the threats have not diminished. More conflicts have arisen, and despite regular talks, there are no signs of illegal occupation of our land ending anytime soon. The famous Islami slicing policy is in action, and our response has been muted. I need not remind the government that such silence only encourages the aggressor, who sees this as a sign of weakness. In addition, our half-hearted economic countermeasures have been ineffective. Our trade deficit with our main challenger has reached a very new high last year. Protection and unity and sovereignty of the nation is not the work of one individual. It is also not about seeking personal glory. It is national unity. I would like to pay tribute to late General Rawat, our first CDS, but I am disappointed that such a sensitive post has been lying vacant since the tragic accident. I would urge the government to find his successor quickly. It appears that the government has no succession plan or proper personal planning if one sees the number of high-level posts lying vacant in the executive and the judiciary.
In the speech dealing with foreign policy, I noticed a significant omission. Momentous changes have taken place in our neighborhood when a government in Afghanistan was toppled and its friendly people have been brought under an extremist regime that denies all human and basic rights, has dragged the country into unprecedented humanitarian crisis. Historically and including under this government, India has always stood with the people of Afghanistan and helping them in all possible manner rather generously. Our humanitarian assistance is still reaching Kabul. Given our traditionally close relations and brotherhood that Afghans feel for India, we would urge the government of India to stand firmly with the people of Afghanistan and facilitate travel and trade and continuing education of Afghans in India. The policy so far has so far been left much to be desired. In fact, even today, scores of Afghan students are stranded in Kabul without a visa, denying them the possibility of coming back to the colleges. Their future is being put on hold. Our policy will need to focus on the people, and we should be using our influence to ensure the regime in Kabul works towards forming an inclusive national government. Otherwise, it is feared that Afghanistan will become a playground for radical and anti-India groups. Please conclude. India will have to learn to stand with its friends. If not, we will be repeating the historical mistake of once letting down our friendly people of Tibet. It is well documented that the Tibetans never accepted the sovereignty and suzerainty of the Chinese. Even Nehru, who is much loved by the current government, advised them to approach the UN and sent a young military officer, Zorawar Bakshi, to undertake strategic military reconnaissance in Tibet in 1949. Things did not turn out as planned, and rest is history. Please conclude. However, the nation faces long-term consequences, both action and inaction. In this increasingly multipolar world, India will have to align itself with its own national interests in its own neighborhood and beyond. Thank you very much. Thank you. Shri Birendra Prasad Vaishya. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to discuss on the subject. I raise here to thank His Excellency, President of India, for his presidential address. Sir, in his presentation, President very rightly mentioned during this period our development in the health sector, our development in the infrastructure, agriculture sector, sports arena, everything Honorable President has described in his address. Sir, I must compliment Prime Minister Narendra Modi ji and his government, because within a year our government successfully given 70% adult population of the fully vaccinated. Sir, India is a big country, and within this first span of time, sir, 150 crore Indian citizen is vaccinated, sir. When vaccination started, sir, every part of the world, they have discussed how it's possible India to implement this project, because India have a huge population. But this government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, it is clearly justified that India is doing everything, India can do anything, and it is a great success for Indian government. 75%, more than 70 senior citizen of the country, adult citizen of country, is vaccinated. Sir, in health sector, sir, within this year, our country has developed in marvelously well, sir. Sir, we remember in the first wave of COVID, sir, India is crying for sanitizer. There's shortage of masks. There's shortage of medicine. But, sir, within this year, India developed anything. We produce sufficient masks, sir. Now we can export. We have produced our vaccine, and now we can export, and we produce the medicine also.
This is the successful of this government. I must compliment health sector. I must salute all the health workers for their great successful, sir. Sir, another great achievement of this government is, sir, agriculture sector, sir. Government has given almost priority in the agriculture sector, sir. And during this year, COVID period, what a worst condition faced by our people, urban area, rural area, farmers, everybody faced the problem. Although there is a COVID, sir, 30% agriculture produce has increased during the period, sir. Sir, not only that, sir, 33%, sir, horticulture production also increased, sir. But I must compliment this government, sir. The government procured more than 430 lakhs metric tons of the wheat during the Rabi season, benefit about the 50 lakhs farmers, sir. And record quantity of about 90 lakhs metric tons of paddy was procured during Kharif season, sir, benefited 1 crore 30 lakhs people. This is the achievement. This is the achievement of the government. Not only increase the production, farmers are get benefited, farmers are get their price. Instead of going other place, government has given enough money and government procured this product. I must compliment Narendra Modi for this successful India. Sir, not only that, sir. Not only that, sir. Country should remember one thing. During the COVID period, Indian agriculture products is increased like anything else. This is one of the greatest achievements, sir. Secondly, sir, one more thing, sir. I am coming from Assam, sir. During this period, Assam also export agriculture product to the neighboring foreign countries, sir. This is the achievement of our government, sir. Sir, one more thing. I like to say, infrastructure development. We always speaking of the infrastructure. Through the Bharat Parijojana, sir, infrastructure development is achieved in every part of the country, sir. Sir, if I'm not speaking about the Tokyo Olympic, it will be incomplete, sir. I'm happy to say that, sir, I lead the Indian contingent Tokyo Olympic Games. I was the chief of the mission for Indian contingent, sir. And India, for the first time, India's making history, India getting all type record medals in Tokyo Olympic Games, sir. Sir, in the athletics, earlier our Bindra got the medal in the shooting. In athletics, for the first time, Indian athletes got the gold medal, sir, in the athletics. I must congratulate him, sir. Sir, northeastern region is the very intricate part of our country, sir. Sir, it is long way from Delhi, sir. From Delhi to Guwahati, it is more than 2,000 kilometers, sir. Other northern, it is more than 2,700 kilometers, sir. But, sir, this Narendra Modi government has given well transportation system, well railway system to the northeastern region, sir. And today, I am proudly said, sir, all the capital of northeastern region today, railway connectivity is there. Every part of the northeastern region have a railway to there. There is a better air connectivity is there, and recently the shipping minister has announced there will be water route connectivity will be started very soon, sir. Sir, Assam is famous for tea production, sir. India is getting huge currency, foreign currency from the tea, sir. And small tree grower of Assam played very important role for the tea production Assam, sir. So small tree growers, they are not only produce the tea, sir. They are successfully resolve certain extent of unemployment problem in Assam, sir. So to encourage tea industry, to encourage small tree grower is the call of our. Although government has took some initiative to develop the tea industry of Assam, I specially request through this presidential address, through you, sir, I request Honorable Minister
to government, sir, look after this issue, and they should give a priority, topmost priority, to the small tree growers is our country, in the interest of the Indian economy, in the interest of the northeastern region's economy, in the interest of the Assam economy, and especially in the interest of the curb the unemployment in our country, sir. Sir, one more thing I like to say, sir. Assam is a oil-producing state, sir. Assam have a huge quantity of oil and national gas, sir. And I like to request government, through you, sir, please establish some better there is a lot, this government has taken lots of initiative. This government has given more than 3,000 crore rupees for the expansion of the Numaligarh refinery. This government is taking initiative to biofuel gas production Numaligarh refinery, to export oil products from Numaligarh refinery to the other parts of the world, sir. But I like to request you, sir, some more social activity for the petroleum ministry should be started in Assam, sir, because we are an oil producing state, and this oil sector have a huge amount of money, and they have a special responsibility, special community responsibility fund is there, sir. I like to request through government, through you, sir, I like to request government to take some initiative, given some more money in the social responsibility scheme to the northeastern region, to build some more hospital, infrastructure project, etc., especially, sir. According to report of the World Health Organization, maximum number of cancer patients of our country is from the Assam and northeastern region, sir. I like to request you through you, to the government, to the ministry, please establish some special modern super specialty hospital, especially in Upper Assam, from the oil responsibility fund. I think if this will be done, definitely it will not only benefit from Assam, it will benefit Assam and northeastern region. With this word, sir, I totally support the motion moved by the Honourable Minister to thank the President. I totally support the move. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Sri Mukhtar Abbas Naqvi ji. उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। उपसभापति महोदय, देश ने इन 7 दशकों के अपने सफल सफर में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मौके भी देखे हैं जो कि इस देश के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। मैं इन 7 दशकों के इस इतिहास भूगोल में नहीं जाता। मैं इन 18 वर्षों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया, मैं आपके माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। आज उपसभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान 2 हो गया है। आज इस देश में 2 भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। 2 भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। लेकिन हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, संकल्प को समझने के लिए और समावेशी सोच को समझने के लिए हमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर और सोच से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। आज हमें इस बात का गर्व है, हम सबको गर्व है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी राजनीतिक विचारधारा का है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की इस मट्टी पर हम सब गर्वान्वित हैं।
गर्व करते हैं कि हमारा ये जो एक संकटों का, कंटकों का सफर रहा है, वो सफल भी रहा है और आज दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक धाक भी जमाई है। मैं इन 18 सालों में जो बदलाव हुआ, मैं एक एक करके मैं 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ इस देश में, कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे इस हाउस में, हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, दिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नजर और नजरिए में फर्क है। सर, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है, और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ 5वां परिवर्तन। सर, ये 6ठा परिवर्तन जो है, जो महत्वपूर्ण है, हम सब दिल्ली में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, सुनते रहते थे कि साहब ये दिल्ली में ये नेशनल हाई लाइजनिंग ऑफिस है, ये इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिस है। जहां से किसी भी सरकार का कोई काम आपको कराना हो तो उस इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिस के से आप करा सकते हैं। आज जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की गई है। ये फर्क है मोदी जी के आने के बाद का। सर, जो 7वां फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आज इस देश की राजनीति और इस देश के सियासी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवार के सियासी परिक्रमा नहीं बल्कि परिश्रम और पराक्रम की संस्कृति ने जन्म लिया है। आज परिवारों की पॉलिटिकल परिक्रमा के आधार पर देश की सरकारें और देश की सियासत तय नहीं हो रही है, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस, परिश्रम और परिणाम के आधार पर
इस देश की संस्कृति, सियासी संस्कृति और संस्कार को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। ये फर्क आया है, नवा फर्क। सर, 10वां फर्क क्या है? जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, उसका रोब, उसकी धमक, उसका खौफ, वो आम आदमी को चढ़ाने लगा था। आम आदमी को लगता था कि ये तो लाल बत्ती इतनी इतनी करता हुआ आया, ये तो हमारे ऊपर सारा रोब जमा रहा है, हमसे कोई सुपरमैन है ये। उस लाल बत्ती कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और इस रोब की जो राजनीति थी, जो ध्वंस की राजनीति थी, उस पर विराम लगाया। ये फर्क है, ये 10वां फर्क है। उसके अलावा सर, कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं, वो जानते थे कि अधिकार देने वाले नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर थे। इसीलिए कहा हमने कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण का छल था, उसको हमने समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। कि एक देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय का अधिकार है। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का है। उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। ये परिवर्तन 11वां है सर। एक और परिवर्तन है, जो कोटा, परमिट, कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या राज चलते थे, इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो, या समाज के किसी भी वर्ग को। ये एक फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झाला था, उसमें रोक लगी है। सर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा कि हमारे देश में 12वां मैं बता रहा हूं, कि जिसमें कि हमारे देश में कानून हम लोग बनाते रहते थे, बहुत झगड़े भी करते थे कि साहब इस बिल पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इस बिल पे 2 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, बिल बन गया। अब बिल का ढेर लग जाता था, कानून बन जाते थे। एक ही चीज पर 10 क्रिमिनल कानून बन गए। और उसके बाद उनमें से जो है वो हमने, जब मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम मैं देख रहा था सर, तो मैंने निकलवाया कि ये बिल इतनी पार्लियामेंट ने पास किया, इतना समय लिया, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने या सिलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी बात कही होगी, लेकिन हुआ क्या उसका? तो पता लगता है कि साहब बिल तो जो है वो 12 साल पहले, 13 साल पहले बन गया था, रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने उसे पास कर दिया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसे 1500 से ज्यादा बिल, जो बिल की प्रभावी नहीं थे लेकिन बिल की शक्ल में किताबों का हिस्सा बने हुए थे, उनको रिपील किया। मोदी जी ने आकर के कानून जहां जरूरत थी बनाया भी, और जो जिस कानून की जरूरत नहीं थी उसका खत्म भी किया। ये बदलाव आया, 14वां बदलाव सर, एक और बदलाव, जो बहुत बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि जो कि हर देशवासी को गर्वान्वित करने वाला है, ये जो दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना होता था, उस पर रोक लगी है। उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना कि देश का कोई हिस्सा, भागलपुर से भिवंडी तक देख लीजिए, गुवाहाटी से लेकर के और आप
वाराणसी चले जाइए, देश के किसी न किसी हिस्से में जो है वो दंगा फसाद, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता रहता था और देश जो है इन दंगों की आग से बेचैन रहता था। और उसके साथ साथ आतंकवाद महीने में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था। कभी जो है वो दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकवादी धमाका करते थे, तो कभी मुंबई में धमाका होता था, तो कभी गुवाहाटी में धमाका हो जाता था, हैदराबाद में धमाका होता। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां महीने 2 महीने में आतंकवादी बेखौफ होकर के आतंकवादी अपनी हरकतें ना करते हो। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने देश के लोगों की, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प से लबरेज है, भरा हुआ है। और इसीलिए हमारे पड़ोस के ने एक हिमाकत करने की कोशिश की थी। इस बीच में हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस करके चूहे की बिल से निकाल करके आतंकवादियों को तबाह किया। अफसोस कि उस समय भी हुआ था, जिस देश ने उसे प्रायोजित किया था वो हमसे सबूत मांग रहा था। हमारे कुछ यहां के साथी जो है सवाल पूछ रहे थे। उस समय भी सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर। यह बदलाव हुआ सर। तीसरा 18वां बदलाव सर, हमारे देश में जो है वो हमारे देश के तमाम महापुरुष, महानायक, जिन्होंने कि हमारे देश के हिंदुस्तान के निर्माण में, हिंदुस्तान की आजादी के लिए आज हम अगर सुकून के साथ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उन तमाम महापुरुषों का ये देश ऋणी है जिन्होंने की कुर्बानियां दी। परिवार के परिवार उनके जो है वो तो उन्होंने कुर्बान कर दिए अपने। हम लोग जब गाना गाते हैं कि जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन दिक्कत आई कि हमारी इस देश की कुर्बानी को भी परिवार के पालने में समेट के रख दिया गया। देश के जो महानायकों ने कुर्बानी दी थी वो सीमित कर दी गई। मोदी जी ने आने के बाद जो फर्क हुआ कि हमारे जो लाखों महानायक थे, नायक थे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं पे इग्नोर कर दिए गए थे, उनको सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि जो पहले थे वो हैं, लेकिन ये भी हैं जिन्होंने कि देश के लिए खून बहाया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। आज तुम इस देश में गर्वान्वित होकर के अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हो तो इनके ऋणी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट पर आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा गुजरात में है। महू, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक, एक लंबी श्रृंखला है। तो हमने जो है उस देश के नायकों और महानायकों को परिवार के घेरे से बाहर निकाल करके और हिंदुस्तान के घेरे में रखा, बताया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि वो तो थे ही, ये भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये परिवर्तन सर आया है। सर, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अभी कल मैं सुन रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, फला फला फला, वो बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, बंधक हो गए हैं, एक तरह से उसका कहना था। सर, मैं आपका बड़ा अनुभव है, आदरणीय नेता विरोधी दल का बहुत अनुभव है इस देश के पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, इतिहास का। एक वक्त वो था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए
संख्या बल का इस्तेमाल होता था। कई ऐसे फैसले हैं। मैं लेटेस्ट फैसले आपको मैं 3 तलाक का बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 3 तलाक एक क्रिमिनल कुरीति है, कुप्रथा है, इस पर कानून बनना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। उस वक्त जो है वो कुछ लोगों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए इसी पार्लियामेंट में उस समय की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाया और कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, जो कि संविधान में समानता के अवसर देने वाली बात थी, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई बात थी, नहीं माना। मोदी जी ने क्या किया जो परिवर्तन आया सर? सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कानूनी तौर से क्राइम माना, कुरीति माना, कुप्रथा माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए हम इस पार्लियामेंट में कानून लाए। पार्लियामेंट का सम्मान कौन करता है? ऐसी तो बहुत सी घटनाएं हैं। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस समय की प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ था किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास लिस्ट है, कम से कम 312 ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हुए जिसको कि निष्प्रभावी बनाने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल हुआ। हम तो प्रभावी बनाने के लिए सर करते रहे। सर इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो बदलाव देश ने देखा सर, वो बदलाव कश्मीर जो हमारे देश का ताज है, जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग सोचते थे कभी मतलब सोचते भी, बात भी करते थे यार 370 तो खत्म हो ही नहीं सकता। जितनी भी सेंटर के आप बिल हम पास करते थे, कानून बनाते थे, उसमें लिखा जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून जो है, बिजली जाएगी देश भर में, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी अगर पार्लियामेंट बनाएगा। पानी के लिए जो कानून बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं होगा। रोजगार के लिए जो बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा। जो पिछड़े हैं, कमजोर तबके हैं, उनके रिजर्वेशन का कोई फैसला पार्लियामेंट करेगी, वो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा। शिक्षा से जुड़े हुआ कोई फैसला होगा, उस पर एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा। जम्मू कश्मीर को देश की प्रगति की धारा से काटने वाले 370 को खत्म किया। ये परिवर्तन आया मोदी जी के साथ शासनकाल में। और आज पार्लियामेंट को यह लिखने की जरूरत किसी बिल पर या किसी कानून पर नहीं पड़ती कि ये जो शिक्षा का कानून है, ये जो रोजगार का कानून है, ये जो बिजली पानी सड़क का कानून है, ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये परिवर्तन सर बहुत बड़ा आया है। उसके अलावा आपने सीए का देखा होगा। सीए पर लेकर के काफी भ्रम भय का माहौल पैदा किया गया, जबकि यह हिंदुस्तान का उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में और भुट्टो साहब के समय में एक फैसला हुआ कि जो उस देश के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान उनकी सुरक्षा करेगा, उनके सम्मान की, उनके संस्कृति के, उनके धार्मिक स्वतंत्रता की। ये पंत मिर्जा एग्रीमेंट के तौर से जाना जाता है। वो एक संकट का समय है जब तालिबानी मानसिकता ने जो है वो इन देशों को अपने चपेट में ले लिया। वहां के जो अल्पसंख्यक की बात मैं कह रहा हूं तो वहां हिंदू, वहां पर जो है सिख भाई बहन, वहां पर क्रिश्चियन और भी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैन हैं बहुत से और सभी लोग रहते हैं, उनका सम्मान, उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक अधिकार पूरी तरह से खतरे में आ गए। ये देश की जरूरत थी, ये पार्लियामेंट की जरूरत थी। जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था, उस फैसले को प्रभावी कराने की जरूरत थी। और सीए में अमेंडमेंट आया, आप सबने पास किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। और जिस वक्त अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों का जुर्म चल रहा था, उस वक्त वहां से इसी सीए की वजह से, सीए के जो संशोधन किया गया, इसी वजह से
वहां के तमाम हिंदू भाई, वहां के तमाम सिख भाई, तमाम यहां तक कि जो मुस्लिम भाई भी थे, भाई बहनें थी, उनको भी हिंदुस्तान सुरक्षित लाने और उनकी सुरक्षा करने का काम हुआ है। यह परिवर्तन आया है मोदी जी के आने के बाद और उससे पहले जो 10 साल था उसमें। सर, एक परिवर्तन और आज देश एक बहुत संकट और कंटक के काल में गुजर रहा है। अभी भी कोरोना का संकट आया, किसी भविष्यवक्ता ने यह नहीं कहा था कि कोरोना कब आएगा और कैसे आएगा और कौन कितनों को मारेगा, कितनों को नहीं मारेगा। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता था। एक ये बहुत बड़ी आपदा आई और 100 साल पहले जब ये आपदा आई थी, उपसभापति महोदय, जिसे कि स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था, उस वक्त हमारे देश की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। इस 30 करोड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान सब मिला के मैं कह रहा हूं 30 करोड़। उस 100 साल पहले उस स्पेनिश फ्लू में कितने लोगों की मौत हुई थी? 2 करोड़ से ज्यादा मौत, ये डॉक्यूमेंट है। आज हमारी आबादी 140-50 करोड़ के इर्द गिर्द होगी। जिस वक्त ये संकट आया 2020 जनवरी में, फरवरी में, उस वक्त जो है वो हमारे पास ही क्या, जो सुविधा संपन्न देश भी थे सर, उनके पास भी कोई सुविधा संसाधन लोगों की सेहत सलामती के लिए नहीं था। हमारे देश के तमाम लोग, जो लोग के विदेशों में रह रहे थे, लाखों की संख्या में लोग थे, जिनको कि उनके देश के लोग जो है वो कह रहे थे आप हमारे देश खाली करो, क्योंकि हर आदमी, हर देश अपने अपने लोगों की सेहत और सलामती की चिंता कर रहा था। मोदी जी ने आने के बाद फौरन पहला काम किया, जो लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में थे, जो लोग जो है वो ब्रिटेन में थे, अमेरिका में थे, ईरान में थे, इराक में थे, सऊदी अरब में थे, या देश के अन्य अलग दुनिया के हिस्सों में थे, विशेष व्यवस्था करके उनको यहां सुरक्षित हिंदुस्तान लाना, उसके बाद उनको जो है वो उनके यहां रुकने की व्यवस्था करना, कुछ उसमें हमारे फौज के लोगों के संस्थानों का को जो है प्रयोग किया गया, कुछ और संस्थान बनाए गए, क्योंकि ये सब एकदम बहुत जल्दबाजी में हो रहा था। लाखों लोगों को भारत से सुरक्षित लाना, उनकी सेहत सलामती, और करोड़ों लोगों के हिंदुस्तानियों की सुरक्षा और सेहत सलामती। और जो 2 करोड़ सर हम लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, वो 2 करोड़ लोगों में जो डॉक्यूमेंट है सर, उसमें लगभग 80% लोग भूखमरी से मर गए थे, दवा न मिलने की वजह से मर गए थे। मोदी जी ने आने के बाद क्या किया? मोदी जी ने सबसे पहले जो गरीब था, जो कमजोर तबका था, इस संकट काल में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाने पीने की, अनाज की और भोजन की व्यवस्था करी, जो आज तक चल रही है। अभी समाप्त कीजिए आपका समय। ये एक बहुत बड़ा सर परिवर्तन है और बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि आज जो है वो मैं 18 साल की बात कर रहा हूं, यानी आज से 8 साल 10 पहले क्या था और आज क्या है सर। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, जब आज देश की, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, आज देश की सर, आपके बहुत सारे स्पीकर हैं। हाँ सर, और आपका जो टाइम था वो खत्म हो गया। तो सर ऐसा है, मैं एक बार, जब ये सरकार बनी 2014 में, जनता ने जनादेश दिया, तो उस वक्त पूरे देश में शोर मचा। किसी ने असहिष्णुता का शोर मचाया, किसी ने कहा कि इस देश से तो अब तमाम देशों की कुट्टी हो जाएगी, खासतौर से इस्लामिक देश तो अब इधर झांकेंगे भी नहीं। ये सारे के सारे चुनौतियां, और यही नहीं, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान और इस देश के राष्ट्रवाद की जो सियासी लिंचिंग हुई है, उसकी पराकाष्ठा हुई। और एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं से पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र होती। जो मोदी बैशिंग की सनक थी, वो भारत बैशिंग का साजिश का रूप लेने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की ताकत, हिंदुस्तान की शक्ति
और हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों के सम्मान पर नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति ने उस पर असर नहीं पड़ने दिया, आंच नहीं आने दिया। सर, ये 28वां बदलाव है इन 8 सालों के अंदर का, जो पिछले 10 सालों का और 8 साल के बीच में है। तो सर, हम अपनी एक ही बात कह के खत्म करेंगे कि इस संकट के समय में, इस कंटक के समय में, जब कोरोना का भी कहर था, तूफानों का भी झोंका देखा, टिड्डियों का भी हमला देखा, फिसड्डियों का भी हमला देखा, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के लोगों के लिए कमिटमेंट किया था, इस देश के लोगों के सम्मान, इस देश के लोगों की सुरक्षा, इस देश के लोगों की समृद्धि का जो संकल्प लिया था, उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। इस संकल्प के साथ इस सरकार ने काम किया और आपको इन 8 सालों में 28 बदलाव जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू। श्री संजय राउत जी। Shri Sanjay Raut ji, are you anywhere in the Lok Sabha? No, I don't think he's here. Then Shri Kanak Medla Ravindra Kumar ji. He's also not here. Shri Abdul Wahab ji. Yes, madam, thank you very much for giving me a chance. First of all, I am raised to oppose this motion, but after listening Mr. Our Minister Naqvi sir, 28 reasons 28 I think, 28 reasons he found to support this government. I have seen 2, out of this one I have two which you are not mentioning. You are not mentioning the right to. I am supporting only on 2. Maybe you can make it 30. 28 plus 2. Because in skilling and in some waqaf, other than whatever he told was, everything was done by previous government also, and any government will do. He is only repeating, only praising Modi ji. Increasing the hate speech and communal attack against minority community, particularly Muslims and Christians, he was not mentioned. Young Muslim women professionals are auctioned through online. Statues of Jesus Christ were smashed and churches were attacked during the Christmas. This House should be unanimously condemn such incidents happening in our great country. And about unemployment, nobody mentioned, even President. It is observed there are more than 8 lakhs of vacancies in the central government. Why is the central government not filling these vacancies? I urge the government to immediately fill and the vacancies, at least in central government institutions. Honorable Chairperson, I take this opportunity to appreciate the government and Prime Minister Modi for his Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, skill development program, and the way it is promoting the startup. I sincerely appreciate the department and ministers for the same. Honorable Chairman, however, I am concerned about the decline of India's global stature. It was a dream of our former President Abdul Kalam ji to convert our country into a superpower by 2020. He was very hopeful of youth and power of education. Today, a large section of our youth are unemployed and uneducated. The government under Manmohan Singh was taking the country in the right direction. All of a sudden, our growth and development have taken a U-turn. Our economic growth indexes and Sensex index must be moving upward. But surely there is a significant section of our society who is being left out in our growth. There is an increasing inequality in our society, both in social and economic terms. Honorable Chairman, India's image as a champion of democracy and human rights is diminishing due to its increasing intolerance to minorities and intellectuals. The world respects Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru as their values. But today,
a section of our society is disrespecting our Mahatma Gandhi ji. This disrespectful attitude towards Gandhi should stop. This House needs to take a lead in fixing these issues that I have raised. One more thing I want to mention, last thing. MP Lads Fund was stopped because of Corona. Agree. But when I came as a member of parliament in 2004, the amount was 5 crores. At that point of time, I could make minimum 1,000 classrooms with that 5 crore. Now, I can make only 200 classrooms. As I am telling, I am not only making classrooms. I could buy a computer that time by 50,000. Now it is okay, 20,000. But government should increase the MP Lads from 5 crores to 20 crores minimum. 24 crores was actually the inflation rate. So I urge the government to re-engage this one, MP Lads Fund, so that money is going to the public. Please observe silence on this side. Please observe silence. Yeah. Excuse me. I am raising an issue for you also, for BJP members. It's common, not for me only. I am the only one. So I urge the government, and I oppose this motion of this one to the President Sahab, and he was making just a letter given by the Prime Minister. Thank you very much. Thank you, Wahab-ji. Dr. Fawzia Khan. She's in the Lok Sabha. Dr. Fawzia Khan. Yes, but she hasn't responded yet. Then we go to the next. Shri Ramdas Athavale ji. Shri Ramnath Thakur ji. Sabha. लोक सभा माननीय उपसभापति महोदय, आप बैठ के भी बोल सकते हैं रामनाथ जी, चाहिए तो जी। आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तीसरी महामारी में कोरोना के दरमियान हम सबों के बीच से जो आदमी नहीं रहे, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना हम व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी संवेदना उनके परिवारों तक पहुंचा दें। सभापति जी, उपसभापति जी, मैं सबसे पहले सरकार को यह बधाई देना चाहता हूं कि भारत में पहली बार कोरोना महामारी की दवा बनाने में अग्रणी रहा और अपने देश में ही नहीं, विदेशों में दवा की सप्लाई की और लाखों लोगों को जान बचाने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन वैज्ञानिकों को और भारत सरकार के मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं कि लाखों लोगों को इस दवाई बनाने में और उसकी रक्षा में कामयाबी हासिल की। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार भारत में रक्षा मंत्रालय ने भारत में उपकरण बनाने का काम किया। जो विदेशों से आते थे सामान, उन विदेशों से न ला करके अपने देश में बनाने का काम किया और भारत को समृद्ध बनाने का काम किया और दलालों से बचाने का काम किया। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैं सराहना करता हूं।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कृषि के मामले में खासकर गंगा के किनारे 9 राज्यों से होता हुआ बिहार में जो सम्मिलित होता है, उन गंगा के किनारों में हरे पेड़ लगाना, पौधा लगाना, मक्के की खेती करना, हरी सब्जियां उगाना और पर्यटन स्थल को समृद्ध बनाना, ये भारत सरकार ने ये अनोखा काम किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जन खाता का जो खोलने का काम किया, ग्रामीण महिलाओं को दिन भर लग जाता है किसी बैंक में जाने के लिए और दलालों के हाथों उसे परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं भारत सरकार से कि ग्रामीणों में, पंचायतों में, गांवों में बैंक का सृजन करे, बैंक खोलने का काम करे और 6,66,000 गांवों में बैंक को से समृद्धि करे। इनके साथ हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वहां के ग्रामीण व्यवस्थाओं, खासकर महिलाओं को सुख और सुविधा मिले, दिन भर बैंक में रहने का मौका न मिले। इसलिए हर एक पंचायत में बैंक खोलने का हम निवेदन करना चाहते हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ की समस्या से हम लोग ग्रसित रहते हैं। बाढ़ की समस्या से निदान कराने के लिए भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करे और हाई डैम बनाने का कोशिश करे और बाढ़ की समस्याओं से निजात दिलाने का काम करे। यह हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। बिहार के लिए हम विशेष पैकेज की मांग करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि भारत सरकार बिहार सरकार को मदद करने का काम करेगी और बिहार की जो समस्या है उसे दूर भगाने का काम करेगी। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया कि कोई भी गरीब और बेसहारा व्यक्ति भूखा से न मरे। इसके लिए भारत सरकार ने जो काम किया है यह सराहनीय है और इसको और आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। फसल बीमा योजना में भी बदलाव किया गया है ताकि तकनीकी के आधार पर उनके दावों को खारिज न किया जा सके और इसका परिणाम यह हुआ है कि 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है ताकि उनकी कठिनाइयों का कम किया जा सके। अब सरकार की योजना यह है कि डीबीटी के तहत किसानों को उपज सीधे खरीद की जाए तथा पैदा उनके खातों में सीधे डाला जाए। महोदय, मैं इसके संबंध में सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यद्यपि जन धन योजना के माध्यम से अधिकांश गांवों में बैंक खोलने के लिए मैं निवेदन कर चुका हूं। महोदय, यह संतोष की बात है कि सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर
के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। भविष्य में रेल, राजमार्ग और हवाई यातायात अलग अलग विकसित नहीं होंगे, बल्कि इनका एक मास्टर प्लान बनाकर इन्हें तैयार किया जाएगा। यह भी सुखद है कि वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 100 मीटर से अधिक की रफ्तार से 36,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। मेरा यह अनुरोध होगा कि जब तक सरकार इस प्रकार की योजनाओं को लागू करे, जो ऐसा करते समय उन राज्यों पर विशेष फोकस करे जो इस मामले में पिछड़े हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार में जो राजमार्ग परियोजनाएं एवं पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है, उसे तेजी से पूरा किया जाए। अभी ये कार्य वर्षों तक चलते रहे हैं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सरकार किसानों, नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष यत्न से तथा रोटी रोजगार के साधन उपलब्ध करावे, ताकि देश में खुशहाली आए। तभी हम सही माने में संविधान में व्यक्त भावनाओं के अनुरूप तथा साथ ही महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गौरवशाली भारत के निर्माण के आह्वान को साकार कर सकें। मैं कल सुन रहा था नेता विरोधी दल की बात को। मैं याद करता हूं 63-64 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब लोकसभा में फर्रुखाबाद से जीत के आए थे, तो उन्होंने अविश्वास भारत सरकार के विरुद्ध में, कांग्रेस के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि आप इसलिए हटे कि हमारे किसानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को जो हक आपने मारा है, उस हक को दिलाने में कामयाबी हो। डॉक्टर लोहिया ने यह बताने का काम किया था अपने अविश्वास प्रस्ताव में। लेकिन नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो उन्होंने शिकायतों की झड़ी लगा दी, लेकिन एक भी उपाय उन्होंने नहीं बताया कि यह काम करने से नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को ये फायदा होगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि पुलिंदा तो आप बांध देते हैं कि यह काम नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुआ उसको आप धारण कीजिए, और जो काम नहीं हुए सकारात्मक रूप से आप भारत सरकार से निवेदन करें कि यह काम करें। यह जब आपके मन में विश्वास पैदा होगा तो सरकार के प्रति भी और आम जनता के प्रति भी आपके बारे में अच्छी सोच बनेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार जो पिछड़ों न्यायालयों में जो आरक्षण के आधार पर न्यायाधीशों की बहाली आरक्षण के आधार पर करना है, वह निश्चित रूप से करें। जो बैक लिस्टेड जो जगह खाली हैं, भारत सरकार में 8 लाख लोगों से अधिक जो भर्ती का है, उसको भरने का काम करें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और राष्ट्रपति के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामनाथ जी ठाकुर जी। श्री अजित कुमार भूया। Yes, please. Honorable Vice Chairman, sir, Madam, thank you very much for giving me the opportunity. As I stand to speak against the motion
I would like to know that what happened to the doubling farm income. When I was going through, I did not find any indications of how government is planning for the welfare of farmers. I would like to know what happened to these investment targets, 10 crore jobs and 5 trillion economics. The normal salaried class got Mahabharat courts, whereas corporate taxes got reduced. The pandemic has exhausted the nations, but what is the relief to come out from such agonies? But as usual, government chooses to ignore the shrinking middle and lower income class. 8 lakhs affordable houses will be completed at rupees 44,000 crore under Prime Minister Awas Yojana in 2022-23. This means rupees 55,000 for each house. I do not understand what kind of house will be of rupees 55,000, especially in the hilly areas of the northeastern region. Agriculture and allied activities which still employ the largest bulk of the population have been left without any mention in the speech. Madam, in 2021, the income of 84% of households has gone down, whereas government income increases 64.9% more in comparison to 2020. The nation is facing terrible inflation, and there is no mention of how to give relief to the middle and lower middle class. There is a reflection in the speech that the mirage of Achhe Din has been conceived, but the truth is ever farther away. I feel the nation must wait for 25 more years for Achhe Din to arrive. It will not be an exaggeration if I say that I sense it is anti-federalist policy and approach of the government of the day. The subsidies on several schemes which directly benefit common people, roughly 80%, has been reduced. The core of the core schemes, including Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee schemes, faces a cut. I had a high expectation that the presidential speech would refer to rural jobs and their avenues, but funds had been cut by 25%. Vice Chairman, Madam, 2014, I would like to say 2014 promise of Achhe Din, 2017 promise of New India, 2022 promise of Amrit Kal in 25 years. The goalpost keeps changing as the timeline keeps changing, as the promises keep changing. Promises are good, but delivery is better. 4.6 crores have been pushed with poverty, and 84% households have suffered from loss of income, and India ranks 104 out of 160 countries in the Global Hunger Index. I do not find any capsules on how to recover from these agonies in the speech. 66 lakhs MSMEs were closed, and this has strained the people to go back to their native places, but there has been no scope and incentives to employ those people at their respective places. Madam, I represent Assam in the upper house, and the government has claimed that peace and tranquility prevail in the northeast states. The government has not spelled out a Naga peace solution, as the honorable members of the House know that the Naga conflict is the mother of
all other conflicts of the region. The framework agreement was signed in August 2015 in the presence of the Prime Minister of India, and Prime Minister had subsequently claimed that the long-pending Naga conflict would be resolved in no time. More than 6 years had gone, but what is the latest update of the Naga conflict is still a mystery. I am of the strong view that unless the Naga conflict gets resolved, the peace process in the region will be just IWAS, and a piecemeal approach will continue to disturb the region. Manipur and Assam's peace-loving people are still longing for resolution of conflict, and the government of India is yet to start a dialogue with several outfits. I am confident that peace and development should move simultaneously, and if the government of India takes bold initiative, bold initiatives in this direction, as the region has been strategically very important and have 98% international border. Thank you very much for giving the opportunity to speak few words. Thank you. Shri Ripun Boraji. Ripun Boraji. Is it? Come here. Here you can come. My time may be counted from now onwards. Thank you, Madam. First of all, the entire country, with high expectation, they were looking that the President's address will be that we have already passed 3 pandemics. So the entire economy of our country has been badly devastated by the pandemic, and the people of this country wanted that, since the President's address is the roadmap of the government for the coming years, so definitely there should be ways and means how to recover, how to develop, how to rebuild our economy. But nothing has been mentioned. Meanwhile, many of my friends have already explained. So this 84 crores, we have 130 crores population in our country, and out of that, 84 crores peoples, this income has been come down drastically during this pandemic period, but in the presidential address, not a single word has been mentioned. Not only that, Madam, during our UPA government, when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister, the 27 crores people have been upgraded from below poverty line to above poverty line. This is not my report. This is the Niti Ayog's report. So now, during these 7 years, you are saying there's a 5 trillion country, we are leading our country to $5 trillion. But during these 7 years, nearly 5 crores people have gone again below poverty line. Now, our country, it is very same. We are saying we are Vishwaguru, but we are very same, Madam, that in the world, in the global poverty, our India poverty is the half of the global poverty. So this is the, Madam, our present burning problem is what? This unemployment problem, this skyrocketing prices. Not a single word has been mentioned in the presidential address how to tackle the unemployment problem, how to tackle the price rises. Apart from that, Madam, the purchasing power of our people in this country have been hugely declined. The individual consumption has been hugely declined. But in the roadmap, what we call, the BJP said that it is a roadmap
of the government, but in the road map, nowhere road is mentioned how to tackle this situation. Not only, madam, I just, in the para 15, in the presidential address, madam, para 15, the government has very proudly said that during pandemic period, we have done a great thing. What great thing? That not a single citizen was left in hunger, left in hungry. It is said. But what is the reality? They say that 80 crores people have been given free rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Nidhi Yojana. But what is the reality? This reality is our people in the world global index, our India's number has come to 101. It was 94 in 2020, and it has come to 101. And that too, madam, we are far, far behind than Bangladesh, Pakistan, and Nepal also. So this is our government claim that this is the largest food distribution program in the world. But this is the position. Not only that, madam, yesterday our LOP has also said that all the time we are hearing one complaint that 70 years, 70 bachar aapne kiya, 70 bachar aapne kiya. हाँ, 70 बरस तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में किया, मैं इसको एक हमारा गांव में एक कहावत है, मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है, वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है, और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है, तो वो आरोप लगाता है, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया. तो यही है हाल, यही है. आप देखिए मैडम, मैं ये नीति आयोग का है, मेरा नहीं है, जो जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जवाहरलाल नेहरू, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. I.K. Gujral, H.D. Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization. And our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU. So this is what we have done 70 years, and what you have done in 8 years. Not only that, madam, one more important thing, that in para 40, it is mentioned about women empowerment. Para 31 in the address, it is mentioned in the women empowerment, and said that 85% of the households, women, have been given Ujjwala gas. Yes, it is the data. By simply giving Ujjwala gas, there is no women empowerment. There cannot be women empowerment, but the government is not taking the feedback. There is no monitoring. The Ujjwala gas we have given, first cylinder women has taken, but the government has no knowledge. They are not taking this information that after taking the first cylinder, the women
has not been afforded to take the second cylinder at cost of rupees 1,000. It is lying. The cylinder is lying in the kitchen of the poor woman. This is women empowerment. This is women empowerment. Not only that, madam, our Congress government for women empowerment, we have made 33% reservation in Panchayati Raj, 50% reservation in urban local bodies, and we have passed bill for reservation of women in Parliament and the Assembly also. But what you have done? What you have done? What about that? It is lying there. Not only that, this NCRB report of 2020. What happened? There is crime against women 3,87,997 in 2019. And in 2020, there is crime against women 3,57,360. Now you see, this is, if our women is not protected, how can we say women empowerment? What is the meaning of women empowerment? If we cannot protect our women, not only that, we show for the Beti Bachao, Beti Padhao. It is a very popular slogan, Beti Bachao, Beti Padhao. But what is Beti Bachao, Beti Padhao? No, Prime Minister said Padhao, but we are not saying Padhao. As anything. So here you see, madam, that in the year 14 to 18 years, children committed suicide. In 2019, 9,613, and 2020, 11,396. That is, in 1 year, 18% increase of suicide of girl children of age 14 to 18. Is it Beti Bachao, Beti Padhao? Is it Beti? This is not my data. This is your data, NCRB data. Not only that, madam, now we are coming to another point. That is, I must say, I am from Assam, I am from Northeast, and my friend Ajit Bhia has already said about Northeast also, and I also want to say, in para 74 of the presidential address, there is mention that we are giving top priority for the development of Northeast region. My friend Rijizu is also there. But what is that? You see that in Assam, 2 private sector undertakings, 2 paper mills have been closed down. Not only that, during this from 14 years to till today, not a single mega project was sanctioned for Northeast region. Simply airport to the Hulengi. This is not enough. This is the only one airport for Hulengi, and that decision was of our UPA government. Except that, but the other airport, in the name of Bharat Ratna, Gopinath Bordoloi, that airport has been sold to Adani. This is happening. This is happening. The Armed Forces Special Power Act, that has been grossly misused in Northeast region recently in Nagaland. On December 5, on December 4, the military had killed 14 numbers of civilians. It is a very thing. Normally our military is used. To against the foreign aggression, but our military has killed our own people, and nothing has been done. So these Naga people, they are going for long hesitation. The Alpha problem in Assam, the other extremist problem in Assam, the Naga peace talk has not been done, and no mention has been there. So how you can improve the Northeast region? Not only that, madam, now I want to come to para 14. In para 14, there is said that government is giving top priority for scheduled castes, scheduled tribes, and OBC. But what is the reality? What is the reality if we again come to the NCRB report
that we have seen the scheduled caste people, crime against the scheduled caste people, 50,291 in 2020, and for scheduled caste, that is the increase of 9.4% of crime against the scheduled caste people in comparison to 2019. And scheduled caste, scheduled tribes people, there is crime against them 8,272, and that is 9.3% increase against this. You have to start just 1 minute. So this, if we cannot protect the scheduled caste and scheduled tribes people, where is their empowerment? Where is their development? We have cut their budget. We have not given the scholarship of these scheduled caste students for the last several years. Now we are giving the priority to the scheduled caste people. So this is last, madam, finally, I have come to this point only, that I would have been very glad, 1 minute, madam, I would have been very glad to extend our thanks, to extend our gratefulness to the President of India and to the presidential address. Had there been mentioned this thing, what is that? That your slogan is Sabka Saath, Sabka Vishwas. But you do not have Aapka Vishwas nahi hai. Aapka Vishwas aapka mantri ka upar nahi hai. Aapka Vishwas judges ka upar nahi hai. Aapka Vishwas army officer ka upar nahi hai. आपका विश्वास opposition leader का ऊपर नहीं है, आपका विश्वास आपका मंत्री का ऊपर नहीं है, तो इसीलिए आपने क्या किया, जब फॉरेन से तुल मंगाया, स्पाईवेयर मंगाया, जो पेगासास लगा दिया. You can say आज जो पेगासास, जो आज ये जो सारा इंटरनेशनल में, सारा वर्ल्ड में हमारा इंडिया का डिफेंडर सबसे you claim. Honorable member, please wind up, otherwise I'll have to call the next speaker. India is the largest democratic country, but what you have done here? Okay, honorable member, I'm calling the next member. You have finished our rights by applying Pegasus, and Prime Minister has given a lie. Thank you. He misled the country. He said that, no, we have taken Pegasus, but the recent New York... Thank you, Boraji. Thank you, Boraji. New York now, Shri Jawahar Sarkar. The government has purchased Pegasus. Thank you, Boraji. Shri Jawahar Sarkar. Thank you, Madam Chair. This is my maiden speech. Yes, he's in the Lok Sabha. The first speech I'm going to make in Parliament after a patient wait of 6 months. I have called up Jawahar Sarkar ji. You can say it in your speech. You can react. Madam Chair. Jawahar Sarkar ji. Yeah. Yes. Yes, Sarkar ji. Yes. Madam Chair, thank you for the opportunity of me to speak before this August House. I celebrate the 6th month of my oath-taking. So I have not spoken a single word in 6 months. Could you sit down and speak so that you are more audible? Shall I sit down? Yes, please, so that you'll be more audible. So, that's right. Thank you. This is the 6th month of my oath-taking, and thank you very much for the first opportunity to speak in 6 months. I hope you would be gracious enough to give me the time allotted to maiden speeches. We have heard a lot of Modi Nama for the last couple of days in a manner that puts anyone to shame, anyone with certain amount of self-respect. India is today at the crossroads as it has never been before. Indian history is going to be judged on what we do today and what we do for tomorrow. Our polity is shattered. Our political framework has never been so threatened. The political framework created by those who fought for India's freedom, those who did not by those who ran away from India's freedom struggle. Our society is fractured. Brother is against brother, and it is now a credit to discredit someone else. Our economy is mauled. It has never gone through such a bad patch. I have worked for 41 years in government, and I know that we have never gone through such a bad patch, not even in 1991.
and much of the destruction of the economy is thanks to deliberate policies that have not understood their meaning. The first two problems that I would highlight are inequality or inequity and joblessness. For God's sake, as the representatives of the people of India, we need to understand that the printed word and the flowery phrase do not mean much to those who go hungry, those who are without jobs. As we stand and talk today, 100 crores is the labor force between 15 and 64. Between 15 and 64, government has said there are 100 crore people, and it is government and CMI and others who have admitted that only 40% is a labor participation ratio. This means, in effect, that 60 crore Indians have no job security. No job security. We need not quibble over the exact number of unemployed, those who are without any job whatsoever. Forget security. It could be around 6 crores. The rate of unemployment has never reached such a devastating portion as it has reached today. On the other hand, we see in this inequitable system, in this open capitalist system that has been ushered in by a certain person in 2014, never before in the history of India have we seen such a naked capitalism. We see that somebody who flew him in a plane has shot up from 14 billion US dollars to 41 billion US dollars. The bottom half of India have lost what they had, and they are now holding on to 13% of the national wealth. 13% of the national wealth is held by the bottom half of India, while the top 10% alone, the numbers are just a handful, have abrogated 22%. We can go on figures of poverty because poverty itself is open to definition. One reliable statistic says that about 15 crore Indians were lifted out of poverty in the last in 10 years from 2006. If we go by that figure, 15 crores lifted out of poverty, we have to see along with it that 14 crores have been pushed into poverty in the last 2 years. What a credit. Pushing them back into poverty. Joblessness, I have already told you. So without an equitable economy, what does it matter whether the Indian economy reaches 3 trillion or 30 trillion? Because all of it would be going into the pockets of a few while the others go hungry. Hunger has already been mentioned. To give effect to this, what I would say, a misconstrued game plan, we find privatization has been given much more emphasis than ever before in Indian history. The disinvestment budget for 21-22 is 1.75 lakh crore. I wonder how much they have been able to get. But over and above this, disinvestment is giving it up forever. Government has come up with a new ploy called the National Monetization Pipeline. This NMP targets 6 lakh crores. 6 lakh crores over a period of 5 to 6 years. And this year itself, I think its target is 88,000 crores. 20 categories of national assets: roads, freight corridors, railway lines, power, 6 lakh crore watts. 6 lakh crore watts of power, gas, 8,000 kilometers of gas, 25 airports, and I can go on with the list, would be handed over for a lease period to those who may return them after extracting whatever was there in them. What guarantee is it? What guarantee do we have that after the so-called lease period, we shall be getting those goods that we gave them? If at all we have to give them. 1.6, there are a large number of coal projects, and we know who is the largest coal handler in India. Again, you come to that same question,
For whose benefit are we going for massive privatization? You have not put up any public assets. Who has authorized you? Who has authorized you to sell off family silver? You have not earned it. This is developed from the earnings of the taxpayer and by visionary leaders. And you are now tasked yourself with the task of selling them over to people friendly with you. When I use a term like that, let me give you an example. 6 airports were privatized. They were privatized to a friend. That is all I need to say. The procedures were tuned accordingly, as bureaucrats would say, and all 6 airports went to a person who has never handled an airport in his life, may have only traveled in an airport as a passenger. What happens if he puts on captive rates now? The LIC is the crown jewel of India. The LIC's worth is around 40 lakh crores. It has 6 lakh agents and employees. This LIC of 40 lakh crores, you know what 40 lakh crore means? Our budget is normally around the range of 35 lakh crores. So LIC that has built up such and such a solid institution is now being diluted in favor of American insurance companies. I'm putting it bluntly, in favor of American insurance companies. Banks, over the last 12 years, banks have given us 16,55,000 crores of profit, operating profit. What you show as actual depends on what you need to force them to deduct for NPAs. While the inflation rate is at 6%, the fixed deposit rate is below 6%, at 5.5%, at 5%. So we as a government are actually stealing 1% from the depositors' money by eroding its value every year, eroding its value. Never before has this happened. I look upon just two sectors that ensure that the next generation of Indians are better than what we are, what we were. Education. In education, the figure given by the Education Minister yesterday in a reply to a question, he says that 5 years ago, the central government contribution to education was 1.07% of the GDP. 1.07% of the GDP. The Education Minister's reply is that Mr. Modi's government has brought it down this year to 0.09, 0.9. It has come down below even that shameful 1% to below 9%. I understand that you don't understand education. It's all right. You don't need to understand. You can flaunt degrees. The states, the poor states, cash-strapped states, have contributed 3.31% of their money. What they have contributed amounts to 3.31% of the GDP. Therefore, India's total contribution to education to GDP comes to 4.30, thanks to states. Thanks only to states. But then I find in this government, the left hand does not know what the right hand is doing. The economic survey gives in page 352 that the education's percent to GDP is 2.8%. Just now, the education minister said it is 4.3%. And on page 352 of the economic survey, you say 2.1%. 2.8% to 3.1%. Bhai Sahab, there is a lot of difference between 4.1% of the GDP, 3.1% of the GDP, and 4.30% of the GDP. Hajaron, lakhon crore ki fark hai. Education as a percentage of GDP, as I said, has been going down year after year, and you are doing nothing about it. The major schemes in higher education, I was checking, and they have replied that the major scheme for higher education known as RUSA, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, has come down from 1,400 crores 5 years ago to 165 crores this year. From 1,400 crores to 165 crores. This is just an example. Just an example. I move on to health. Health, whenever we talk about, India will not forget those devastating scenes
of people, of corpses being burnt on pavements or in parks, corpses being thrown into rivers to hide figures. The figures that the government of India has given and is repeatedly giving of deaths is challenged by every country in the world, including Burkina Faso. Our statistics have no value whatsoever. We are beating China where credibility is concerned. So we will not forget the massive deaths that happened despite all the drum beating that you undertake now. Why did you not order for vaccine when they were being made in India? Why were you going around the world as a Vishwaguru, as somebody, as a pharmacy of the world, when your own vaccine companies were moving from pillar to post in Delhi, asking for a purchase policy? When they booked these vaccines for a foreign market, you clamped down upon them. And thankfully, you did not declare them anti-nationals, but you got very late. Your late entry into the vaccine market caused an immense number of deaths for which India will never forgive you. On health, our total spend is just 1.2%. It's one of the most shameful things that we bow our head in shame when we talk in international forum. It has gone up from 1.2 to 1.8, but even 1.8 is no percentage. Brazil spends 9.2, Bhutan spends 2.5, Russia spends 5.3, and the advanced countries spend at least 5+. Do not look only at India shining. You will get the same fate that the person who spoke of India shining got. Look back, look into ourselves, look into these factors, look into factors like health and education. You talk of Ayushman Bharat, you talk of insurance cover. As somebody said, all the money has gone to insurance company. To look at a difference, come to West Bengal and see the scheme that we have initiated called Swasth Saathi, Fast Saathi. And you will see that everyone who possible has got a card and can walk into a private hospital free of cost, get paid for it because the Bengal government pays for them. Look at where things are working more positively instead of spending hours and hours in devising alphabet to give fancy names to your schemes with your cronies. Look at the state of institutions, the public institutions that uphold democracy. Try Telecom Regulatory Authority of India. That's where the game started. Within a week of his coming, Mr. Modi amended the TRI Act so that the TRI chairman could be his principal secretary. And the chairperson accepted it quite shamefully. That is where the rot begins. Subsequent chairmen of TRI have facilitated the growth of one telecom empire and have devastated all other telecom companies to the extent that Government of India is forced to buy up the major shares in one limping company. Look at the Election Commission of India. I will not comment about the present commission because we have not had sufficient interaction with them. But the previous commission, consisting of a chief election commissioner, was an international shame. His partisanship is a matter that is listed in stone in Nirvachan Sadan. He tampered with everything in favor of the ruling party. To give another example of how elections were run, the Central Armed Police Forces sent to Bengal outnumbered the Bengal police. Can you imagine that in Kerala or any other state? Then the number of Central Armed Forces sent to you are double that, are 150% of your own forces. Are you trying to run a colonial state? But then the people gave their verdict. The people's verdict must be remembered. VVPAT, the paper trail, VVPAT was introduced and forced by the Supreme Court to be operationalized. That VVPAT is today undergoing a feet dragging with the consent of one particular Chief Justice who has now switched on to the other side. Anyway, our humble submission is that when the 2024 election comes, please be bold enough to utilize the hundreds of crores that you have spent on VVPAT and let two results emanate, one from EVMs and the other from VVPAT. Why do we have to force you? Why? What do you have to hide?
use the VVPAT, use the paper trail. And I challenge the Election Commission's Deputy Commissioner who lied before the Supreme Court and then indulgent Supreme Court that it takes 5 to 6 days to count paper trails. I have counted, I don't know how many election results on paper. It never takes that long. Why do you lie and why do you connive with such lying? Election bonds, another institutionalized shame. Look at the institutions that we talk about. Prasar Bharati, that I happened to serve, were a difficult period. The last 2 years that I served under this regime is something that I leave for my biography or something. It was one of the worst. Look at what they have done to the CBI and ED as an instrument of political vendetta. The CBI and ED were excellent professional services. Let me tell you, for even those who are angry with them, their professionalism is being destroyed by putting henchmen at the top and giving them extension after extension in collusion with legislation. The judiciary, I'll not mention. Honourable member, you'll have to start winding up. Okay, okay. The CAG, as a maiden speech, please give me a full moment. Your time is that way already consumed. Because it's your maiden speech, we continue to give you another 2 3 okay. 17 plus 15, 32 minutes. 32 minutes is what I'm entitled. But anyway, I'll wind it up. In honor of the chair, I'll wind it up. Look at the CAGs. Look at the conduct of the CAGs. The last two, under this regime, compromised to such an extent that the nation never came to know the cost of demonetization. The nation never came to know the cost of the Rafale deal and what was proper and improper about them. And one of them has got a Padma Bhushan for it. Maybe the other should also be given one. The original mastermind who actually felled the government in 2014 has procured more rewards than a gentleman would ever do. In any case, we move on. We come to the last major critical point of federal relations. Remember, the Indian Federation and the Indian civilization came together in an act of unison through through their own consensus. We have been ruled by a central authority for less than 500 years. The Mauryas ruled for over 200 years. The Mughals' effective rule was 120 years. The British effective rule was 150 years. From 70 to 80% of India was ruled for 500 years by central powers. Our civilization is at least 5,500 years of recorded history, the historical period, and 500 years or less is what central authorities have ruled, which means that for the remaining 5,000 years, Indians have still coalesced together, come together as a civilization because they felt like it, because they felt it was conducive. Do not turn that into an instrument of hegemony. Look at how the BSF jurisdiction has been extended without consulting the states. Look at how economic grants to the states are being dealt with. And look at the last blow to the Indian Administrative Service. The Indian Administrative Service shuttles between the center and state. It is not the fault of officers that they don't want to serve the center now. 10 years ago, 309 IAS officers served the center. Today, it should have been 409 against 309. The number has come down to 223. Can't you get the message that they don't want to come and serve under you? You can't use force now to draw them out from their cities and work under you. Force does not work anywhere, everywhere. Out of the 6,500 posts, 1,500 are vacant. For God's sake, you have had 7, 8 years to fill them up. Fill them up. Don't hegemonize. Don't bully the state. Don't bully the state. I come down to the last lap of my presentation on the President's speech. The entire thing is being run on controls and arrogance. Even Aadhaar, the linking of Aadhaar to voter card, is another indication of this control freak mentality. The Central Vista is an arrogant display of hubris. There was no need. Please go and see it. Members, please go and see Rajpath. This Rajpath was Rajpath, which was perfectly fine, and it has cost 606 crores.
600 crores to redo the Rajpath and put a few lampshades and lampposts and visitor seats. What sort of nonsense is this? It's just a hubris. It would be much better if you have renamed Rajpath in somebody's name. 6 buildings will come up on 2 sides, 6 unimaginative buildings, 6 unaesthetic buildings will be coming up on 2 sides of Rajpath as a grand plan of the central vista by breaking down the National Museum, Vigyan Bhavan, National Archives of India, the National Cultural Center. Everything has been shattered so that 6 buildings can come. I have served in central bureaucracy, Mr. Modi. You have not served. I know there is no need for it, because even if you bring them down to your Modi Nagar, there will still be people who will be working outside. Kindly wind up, Honourable Member. Draconian rule extends now to snooping, and Pegasus is the greatest example of how this state has become a surveillance state. All evidence points out to the surveillance, but the government does not have the guts to come out and say no. They send governors with the same intention of disturbing the constitutional mechanism of states, only disturbing the constitution. And the one that we have got will also the less said the better. As we celebrate 75 years of India's independence, all Indians are bold. We remember with pride the Quit India movement that was led by Mahatma Gandhi, that was opposed by those who are now monopolizing its celebration. We remember those who went to jail and are to 15 years in jail and are abused on a daily basis by those who never saw the insides of jail. We are proud of our flag that was opposed in writing in the organizer, the mouthpiece of the RSS, in writing. And this allegiance to the flag was brought in at gunpoint by Sardar Patel, who jailed these people for 1.5 years. For 1.5 years, Honourable he put Member, the RSS I'm in sorry, jail. but you'll have to wind up. Okay, in jail. And in these, we are now told that they are the monopolists of patriotism. This government is not worthy of further discussions, because every act that it has undertaken is an act that spells out the deep hubris, the tendency to homogenize a country that is necessarily heterogeneous. Indian civilization will thrive on its heterogeneity, not on any enforced homogeneity. Thank you, Chair. Thank you. Shri R.S. Bharti ji. Thank you, Madam Vice Chairman. Yes. On behalf of DMK party, my floor leader, Mr. Tiruchi Siva, yesterday, sitting in the chair occupied by our founder leader, Peranjar Anna, has spoken very well, and he has described vividly about the non-performance of this government, and he has also pointed out the failures of this government, and he has also suggested so many measures to be taken up by this government. Otherwise, the people of this country will teach you a lesson in 2024. So I would like to endorse the statement made by my floor leader, who was occupying the auspicious chair and historical chair of my founder leader, Anna. He has pointed out so many failures of this government, especially the COVID-19 pandemic situation was mismanaged and mishandled by this government. The President has said we'll have to learn lessons from the past. When the first COVID wave was there, this government should have learned lesson from that and should have implemented in the second wave. Did they do it? One fine morning,
They gave zero notice, lockout notice. What happened? Migrant workers have to walk kilometers from Delhi, jobless, shelterless. Even they were not even to get water from the capital city. To see when we saw in the TV, it was a sorry sight. Women carrying their children in their shoulders, in one hand carrying the baggages, without the slippers. They were walking on their foot for miles, kilometers together. And many of them died on the way. Who's responsible for all this? Because of the failure of this government, not taking a lesson from the first COVID. Therefore, sir, and not only that, so many failures have been pointed out by the previous speakers, and especially the President has said, empowerment of women. Sir, I would remind this House, the Rajya Sabha, passed a resolution for 33% for reservation. What has happened? Where is it? You have got a road roller majority in the Lok Sabha. What prevents this government from passing that bill? You are cheating the public. You are misleading. It is only a mouth. You are making a false propaganda that empowerment has been given to the people, the women. When the Rajya Sabha passed it, it is still pending with the government. Why are you hesitating to vote? That goes that you have got scant respect for the women of this country. In Tamil Nadu, you are giving 50% reservations in the local body. Both in the panchayat, municipalities and corporations. And due reservations have been given to the scheduled caste. Sir, in Tamil Nadu, I want to come to my own state's problems. Tamil Nadu is a land of social justice. We were the pioneers of social justice. Previously, sir, there was in our state, there was fight between the upper caste and the backward class. Our leaders, Dravidian leaders like Periyar and Anna, in Tamil Nadu, reservation, because of reservation. Today, Tamil Nadu happens to be the medical hub. Who was responsible for that? It is the Dravidian movement. From 1920, communal GO was passed in the state of Tamil Nadu, provincial state of Tamil Nadu. What was the reason? Out of 100 seats in the medical college, 95 seats were occupied by the upper class people. No representation to the backward and scheduled caste people. In government offices, sir, I would like to remind this House, sir, an historical event. When the Justice Party was in power, the Chief Minister, who belongs to the Dravidian movement, named the Justice Party, visited a Tahsildar office in Nellore, which was a part of Tamil Nadu then. He visits and inspects the office. From the Tahsildar, there were about 47 people occupying that office. All the 47 people belong to one particular community and they belong to one particular family. Only the Diwali was belonging to the backward community. This came into the mind of the then Chief Minister of the Justice Party, and then they formed the Madras Public Service Commission, which gave representation to the people backward and other. This is the history of our state, sir. Now, NEET exam has been introduced. Because why I want to narrate all this? Because of this reservation, our people, after 70 years, only now they have come up in the medical field, because judges are there, advocates, engineers have come.
In 1950, sir, when the Constitution was formed, the first victim was people of Tamil Nadu. The challenge, the communal GO was challenged on the basis of equality. And the reservation, the framer of one of the framers of the Constitution, Alladi Krishnasam Iyer, appeared for the petitioner, and the Madras High Court struck down the communal GO. Government, state government went on appeal. Supreme Court also struck down. Sir, I would like to remind this House, sir, Periyar, Anna, and our great comrades of the Congress party, all of them revolted against the judgment passed by the Supreme Court. Our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was magnanimous. He accepted the will of the people of Tamil Nadu, and Tamil Nadu was the state which was responsible for giving the first amendment to the Constitution of India. 1951, we, the people of Tamil Nadu, because of the revolt and the voice raised by the dealers of our Dravidian movement, the first Constitutional Amendment was made. But today, sir, the NEET exam, formerly we were fighting with the upper class. Out of 70 years of struggle, now our people, medical doctors have come up, and Tamil Nadu has become a medical hub. To curb all this, now this NEET has come. Now the fight is between the haves and have-nots. Previously it was between the upper class and the backward. Today in Tamil Nadu, sir, it is a fight between the have and have-nots. Who are successful in the NEET exam? What has this government achieved by imposing this NEET exam? Scandal after scandal. Impersonation. Question papers being leaked. Correction of papers, corruption is there. Collusion between the paper setters and the coaches, coaching institutions. So, in Tamil Nadu, sir, 30 people have committed suicide, 13 students of the backward community and the poor people who are below poverty line. A student who secured 100 out of 2,200 marks, 1,159 marks obtained by one student did not get the seat in the medical college. She committed suicide because of this NEET exam. Coaching centers people are going to the coaching centers. Those who go to the coaching centers are getting the opportunity of passing the NEET. Therefore, our Chief Minister M.K. Stalin, in the elections in 2011, gave an assurance to the people of Tamil Nadu. Once we come to power, we will scrap this NEET. To scrap this NEET, to exempt Tamil Nadu from the NEET examination. Please conclude. One minute. I'll conclude, sir. I'm coming to the end of it. It was passed by the state legislature, sir. It was unanimously passed. But it was sent to the governor, sir. The governor is sitting over it for the past 4 months. Is it fair, sir? Since it is in the education, it's a concurrent list, we will have to necessarily send it to the president. He has neither sent it to the president or passed any comments. He is lying over, sir. So, I would request these sort of injustice should not be committed, sir. We are in a federal setup. Our great Anna said once, with this I want to conclude, sir, in Tamil. Aattukku daadi edirke, naattukku governor edirke, which means there is no necessity for a goat to have a beard. Likewise, there is no necessity for a state to have a governor. I think that will come true in the days to come. Thank you. Thank you. Dr. Sasmit Patra ji. माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ये अवसर दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना वक्तव्य रखने के लिए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की ओर से, बीजू जनता दल की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हम लोग इस वोट ऑफ थैंक्स को समर्थन करते हैं, इस धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हैं। मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हुए आज मैं बड़ी भारी दिल से यह कहना पड़ रहा है कि समानता की जो विषय है, समानता का जो सोच है, जो आदर्श है, जो फेडरलिज्म की स्ट्रक्चर है,
जो संघीय व्यवस्था का चर्चा हम करते हैं, वो संघीय व्यवस्था का चर्चा जो है कहीं ना कहीं आज घटता हुआ दिख रहा है। ये मैं क्यों कहता हूं? उसको शुरू करने से पहले माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैराग्राफ नंबर 14 पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वक्तव्य उन्होंने उसमें जाहिर किया था, जिसमें अंबेडकर जी ने कहा है, माई आइडियल वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, समानता, सारे राज्य एक समान, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, किसको ज्यादा प्यार नहीं, किसी को कम प्यार नहीं, सबको इक्वालिटी। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच का जो वर्णन राष्ट्रपति जी ने किया है, अति सुंदर है। बट क्या यह वास्तविकता में हो रहा है आज? वास्तविकता में नहीं हो रहा है। यह वास्तविकता में क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 2019 में, 2020 में, 2021 में 3 चिट्ठियां लिखते हैं वो केंद्र सरकार को और मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख परिवार, 6 लाख घर जो कि ज्यादातर आदिवासी भाई बहनों का है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सम्मिलित किया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र सरकार का एक आवास पोर्टल है मान्यवर, उस आवास पोर्टल को खोलना पड़ेगा। 3 साल से यह आवास पोर्टल खुल नहीं रहा है, यह खिड़की बंद है और यह खिड़की जो है खुलने का नाम नहीं ले रहा। मगर यह खिड़की किसके लिए खुलता है? यह खिड़की खुलती है उन राज्यों के लिए जिनको कि केंद्र सरकार शायद ज्यादा प्यार करते हैं। इस साल जनवरी 2022 में जब जनवरी 13 तारीख को यह खिड़की खुली, खिड़की किसके लिए खुली? ओडिशा राज्य जो 3 साल से मांग कर रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी 3 साल से मांग कर रहे हैं, उनके लिए नहीं खुला। खुला किसके लिए? कर्नाटक के लिए। अच्छी बात है, कर्नाटक के लोगों के लिए, उनके 25 लाख परिवारों के लिए यह खिड़की खुली, अच्छी बात है। मगर ओडिशा के 6 लाख आदिवासी भाई बहनों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से 3 साल से उनके लिए खिड़की नहीं खुल रही है? यह वास्तविकता समझ में नहीं आ रहा। मान्यवर, पैराग्राफ 19 में माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है 1 करोड़ 17 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर जो है वो सम्मिलित किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं। अगर 1 करोड़ 17 लाख घरों को आप सम्मिलित कर सके तो 3 साल से 6 लाख आदिवासी भाई बहनों का घर क्यों सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं? क्या दुविधा है? क्या गलत किया है उन्होंने? अगर 25 लाख कर्नाटक के घर जुड़ सकते हैं जनवरी में, तो आज ये 6 लाख घर क्यों नहीं जुड़ पा रहे? मान्यवर, पैराग्राफ 5 क्यों मैं आता हूं, ये तो एक विषय है और यह मांग भी हमने 0 आवर में रखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो आवास पोर्टल खोला जाए ताकि 6 लाख परिवार जो है, जो आदिवासी परिवार है उड़ीसा के, वो इससे बेनिफिटेड हो सके। मैं आशा करता हूं कि अगर सरकार सुन रही है तो सरकार इस पे गौर करे। पैराग्राफ 5 में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पैराग्राफ 5 में कहा क्या गया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में आज सबका साथ नहीं सोचा जा रहा, कुछ राज्यों का साथ सोचा जा रहा है। सबका विकास नहीं सोचा जा रहा। कर्नाटक का विकास सोचिए, अच्छी बात है, उड़ीसा का भी विकास सोच लीजिए, कुछ गलत नहीं है। सबका विश्वास, सबका विश्वास भी लीजिए, कुछ राज्यों का विश्वास क्यों ले रहे? हमारा भी विश्वास लीजिए साथ में। और सबका प्रयास, आज सारे राज्य प्रयास कर रहे हैं, सारे राज्य आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप कहीं होता है तो उड़ीसा में आज होता है। जीएसटी में सबसे ज्यादा कोई देता है तो उड़ीसा देता है। 20,000 करोड़ अगर रेलवे में कोई देता है, उड़ीसा देता है। खनिज अगर आज देश को कोई देता है, उड़ीसा देता है। मगर जब तक आता है उड़ीसा की बात, आप नकार क्यों देते हैं? उड़ीसा को आपको चाहिए जीएसटी के लिए, माइंस, मिनरल्स के लिए, बट उड़ीसा को जो हक है वो क्यों नहीं मिल रहा? उसके ऊपर मैं एक बिंदु बोलना चाहूंगा। पैराग्राफ 22 पे जो लिखा गया है, मैं उस पर अब आना चाहता हूं। पैराग्राफ 22 में कहा गया मान्यवर, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी।
जो किसान हैं उनको सशक्त किया गया है, अच्छी बात है। और सरकार ने रिकॉर्ड प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट किया टू मैच रिकॉर्ड प्रोडक्शन, यह भी अच्छी बात है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ देश में, किसानों ने किया, और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने किया, अच्छी बात है। 900 लाख मेट्रिक टन आपने प्रोक्योरमेंट किया, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को आपने फायदा दिया, यह अच्छी बात है। तो मान्यवर, अगर 900 मेट्रिक टन अगर आप ले रहे हैं, 900 लाख मेट्रिक टन अगर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो उड़ीसा का 22 लाख मेट्रिक टन पारबॉइल्ड राइस आप क्यों प्रोक्योरमेंट करने से मना कर रहे हैं? 900 लाख मेट्रिक टन आप ले सकते हैं, मगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी दायित्व है, केंद्र सरकार जिसका दायित्व है, ये राज्य सरकार का दायित्व नहीं है। फूड प्रोक्योरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली है कि केंद्र सरकार को फूड प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, राज्य सरकार सिर्फ मदद करती है। मगर केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खड़ी कर रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहता है कि हम फूड प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, आपका जो प्रोक्योरमेंट है पार बॉइल्ड राइस का, उसुना चावड़ा बोलते हैं उड़िया में हम उसको, वो उसुना चावड़ा को हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। 52 लाख मेट्रिक टन इस बार जो है प्रोक्योरमेंट की टारगेट है, 30 लाख हमारा कंजम्पशन है, 22 लाख मेट्रिक टन अभी चावल और प्रोक्योरमेंट होना बाकी है। पिछले साल इस वक्त तक 4 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हो चुका था, अभी केवल 12,000 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुआ है। यह सोच क्यों? अगर सारे राज्य एक समान हैं, सारे विषय एक समान हैं, सारे लोग एक समान हैं, तो कर्नाटक की एक सोच, उड़ीसा के लिए एक सोच, 1 करोड़ किसानों के लिए एक सोच, उड़ीसा के किसानों के लिए अलग सोच, यह पातरंतर नीति क्यों है? मैं आखिर में एक ही चीज कहूंगा मान्यवर, मैं फिर वही बाबा साहेब की उस बात को दोहराऊंगा और फिर अपना वक्तव्य बंद करूंगा। My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. अगर सच में विश्वास करते हैं हम, ये अभिभाषण के अगर एक सोच पर हम सच में विश्वास करते हैं, तो ये सोच हमको बताती है इक्वालिटी रहना चाहिए, समानता रहना चाहिए। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। फेडरलिज्म का शब्द मैं ढूंढ रहा था सर, मुझे फेडरलिज्म का शब्द कहीं दिखा नहीं, हो सकता है मेरी अज्ञानता हो, मुझे दिखा नहीं है। फेडरलिज्म का शब्द ही नहीं है, संघीय व्यवस्था का कोई शब्द ही नहीं है। संघीय व्यवस्था की क्या आवश्यकता नहीं है? यह संघीय व्यवस्था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या आउट ऑफ डेट हो गया। इसलिए मैं आखिर में आपको यही कहना चाहूंगा, यह विषय है, यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय, सिर्फ उड़ीसा का विषय नहीं है, यह संघीय व्यवस्था पे आने वाले दिनों पे एक सवालिया चिन्ह पैदा करेगा। मैं आशा करता हूं अगर सरकार सजाग है, सरकार सोच रही है, सुन रही है, तो इन मांगों पे काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर के केशव राव जी। Sir, I hope you will empathize with my discordant note, because I speak with this discordant note for the reasons, not without reason. One is, we are disappointed with the address which usually done. Nobody expected that you would do it after seeing them for the 7 years. Number two, what has been said could have seen in a global or in a Google or anywhere, so there's nothing new. Yesterday I was hearing from Lok Sabha a leader saying that what we expect in a presidential address is some kind of a strategic vision of the state, of the nation, of the party, of the ruling party. Because what has been done is done which has both plus and minus points. But what is to be done is something which you throw for open discussion. Sir, today I rise with, as I earlier said, with most very hard. Even my Patraji, while welcoming the address, said he was speaking with a heavy heart. So everyone today who is speaking in this, even if they are supporting this, they are speaking with a heavy heart because something is pinning them, paining them. Sir, to me today, our very polity, idea of India is under threat. Today you are talking about all this unity. He has quoted Ambedkar, but I'll quote Ambedkar in this context. Economically we are divided, as yesterday one leader said, but more basic.
secular and cultural. This we are doing. It is eating into our very body politics. It is not only dividing the persons, but their minds, corrupting their minds. So much so tomorrow you will find two differently thinking people on the idea of India. This is not a new thing, but the way ever since the BJP had come into rule, I am not taking the name, the ruling party had come into it. This division of secular Indians and radical Hindu nationalists has sharpened. The conflict between these two identities form the core of polarization in India. And the greatest threat today to this country is the politics of polarization. This is very important. You are seeing, it's all right. I think I'm little elder to a lot of people in this house. So as an elder brother also I can tell you, today it might pay us. It may pay us in some project. But tomorrow when it reaches the hearts and starts corrupting the very body, then you will find two nations, not persons. Persons can be divided, they can be brought together. But the minds will be so divided that they can never be brought together and India will be totally split. This I'm not speaking out of politics, please. This I'm speaking to you out of my concern. That is, I said discarded note. Sir, the Mediterranean-backed politics of polarization is the highest during NDA. You must excuse, this is NDTV's hate speech analysis. NDTV hate analysis. There is an increase of 1,013% in hate speeches, of which 80% are Sangh Parivar members. This has been found in the report. And with a heavy heart, as Patra says, I have a heavy heart, I'm trying to tell you what exactly going to happen. We need to correct our own people. I don't want to go into specifics, but it clearly shows the path of hate towards which the BJP government is heading. Hate politics and communal disharmony is against the very idea of India, advocated by Mahatma Gandhi and all other great leaders. Thus, there is an urgent need to bring a special law to tackle the problem of hate speech as recommended by Honorable Supreme Court in Viswanathan Committee. Sir, the partisan attacks, I tell you, the partisan attacks on India's independent political institutions have intensified. Opposition parties have become extremely wary of defending pluralism and secularism, which needs to be done, but not being done. Hatred and violence against minority communities have flared up. Although various actors have launched efforts to counter the country's majoritarian turn and improve civic dialogue, they have failed. Polarization in India is more toxic today than it has been ever in the past. And it shows no signs of abating. We can't also ignore, this does not mean by only talking about this, I am ignoring the caste division. The division that is possible in the name of caste and the language. That also we must be aware of. The divide over Hindu nationalism is seriously endangering liberal freedoms and pluralist democracy in India. The current wave of polarization has its roots in the colonial and two clashing visions of the idea of India that emerged then. One strain of thinking envisioned the India as a secular nation in which membership was defined not by one's faith but by one's place of birth. The most important proponent of this view was Mahatma Gandhi. Though a devout Hindu himself, Gandhi viewed the Indian nation as a harmonious collection of religious communities. Speaking about the Indian society, I would quote what Patra said, but in this context. Ambedkar ji spoke about this during the federalism, but during the unity that was being tried. We are a multinational nation. We have never been a nation at all. The word nation is not used in the constitution if you see it. It is union of states. And all right, let us go into ideology also. Even if you are talking of a nation, we are trying to build a nation, make a nation out of winning it. How do we do it? We have been 600 nations, sir. And I belong to entirely a different culture known as Dravidian culture. We still have Onam, where we think Bali Chakravarti will come back. Whom you think you glorify or gloat over killing him.
See, these are differences. We are trying for all these 8 centuries to see that how we can find some kind of unity, a thread of unity in the diversities. When we are making such an effort, you are coming, for example, today morning, one of the most sober and very mature minister here, Labour Minister, when I asked him that the particular member wants the answer in English because he was not able to get the translation free, he said, we'll speak in Hindi only. They can look at the translation. See, this kind of attitude must go. This kind of thinking, mind setup should go somewhere. And this we see it today. And today, southern states don't take them very slowly. I belong to one of the southern states. Though I come from the differently a central state where I can speak Hindi and other things. A lot of people here from Tamil Nadu, Kerala, they don't understand your Hindi at all. Try to accommodate them. Their culture is different from you, my dress is different from you, my food is different from you, my marriage is different from you, my entire thing is different from you. And we want to be one because we have been brought in and we are trying to do it. This is what exactly is under threat today. Yes. So, Ambedkar, if you read him, what he says is, my ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. He insisted on that fraternity. Democracy is not merely a form of government. Only because you have a power, you are taking away all the powers of the state government and still say we are running the government and we have the figures. And I thank, not only thank, congratulate Sarkarji. Just now he spoke from West Bengal, Jawahar Sarkar. He punctured every statistics of yours. Statistics are static tricks. These static tricks of yours have been punctured by him here when he quoted you. One by one points where they have gone down, although you have been claiming to be both. I'm not getting into it. Here I'm telling you democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associated living. Why, how you live and how you take us all together is important, which we have never seen in the BJP. If a chief minister from Telangana writes to you a letter asking people to revolt against the center, taking the plows in their hands, and it comes in the entire banners, and new special issues are taken out. Why did this pass? Why did we come to that kind of a pass where a chief minister has to be betrayed against you? He was speaking on agriculture, no doubt, about the agricultural distress. He was speaking about federalism, no doubt, because you are trying to take away his powers. But he was also speaking about your mindset, because he has been very close to you. He has been acting, we have been voting in, today we have decided we should not be with you, we shall never be with you. Why? Why this pass? Why this kind of a change? You must ask yourself, not to ask we ourselves. Whatever it is, as far as I said, Article 5 of the Indian Constitution deals with the provisions related to citizenship. The BJP government has attempted to destroy the secular nature of the Indian Constitution by changing the citizenship law on communal rights through the passage of CAA and NRC. See, this is what exactly we are trying to talk to. You might have passed the bill. People might have protested, might have told you, but you are not taking recourse to it. Sir, whatever it is, this is taking me to the center trying to take usurp all the powers. Sir, federal structure is also under threat, like the very idea of India. The central government, through the passage of several bills, is trying to destroy the essence of Indian federalism. Although the word federalism is not there, but we think we are a federal government and we strongly believe it is a federal government. The proposed legislation not only takes away the power, I'm quoting to you, I give you an example of electricity power bill, which is coming. Sir, that legislation, the proposed legislation, not only takes away the power vested in the state government, but also give an undue advantage to those states that have the BJP government as the ruling party. Please look into the clauses, you will find. I would have asked Patra to make a study and tell you. One size fits all central scheme with centralization of decision making with no choice for states to implement is relevant and useful to analyze. This is what exactly is happening. As I said, the proposed amendment in electricity bill
allows the entry of private players in the power sector. The amendment seeks to improve the economic efficiency of power distributors. It is likely to have negative repercussions for consumers and state-owned power outlets alike. The private entrants will supply power to the infrastructure developed by the state-owned PSUs, while the profit-making areas will be poached by the private players. The obligation to provide the electricity to rural areas will solely fall on the state-owned distribution. This is the electricity bill which is coming. Since the creation of our state, Telangana, the power capacity has increased multiple. It is further expected that within the next few years, the installed capacity of the state will go to 10,000 megawatts. The effective governance shown by TRS party in Telangana has not only electrified villages, but also provided quality assurance. I'm not trying to score a point here. What I'm trying to tell you, the states are doing their best. When they are doing best, we are giving free power 24 hours into 7 to our farmers free. Now this bill will attempt to put meters at every pump set, which means that the threat lingering on these people, lingering over our farmers, that one day or the other the meters will be read. So I just not talked about South India, but please understand my spirit of my agony, not the words. The South states are being ignored, according to me. The central government's persistent efforts to sideline southern states in the distribution of tax revenues is evident. The South Indian states have taken numerous policy measures to ensure population control and collecting a higher portion of taxes. However, the distribution of funds to states by the BJP-led central government fails to provide any incentives to states who have performed well economically. Our state of Telangana expected 38-odd crore grant in aid from the 2021-22, but budget, however, we received only a meager amount of 5,155 crore. I am quoting this only as an example to you. Sir, I would like to state Telangana is the fourth largest contributor to the Exchequer Center. We are the fourth largest, except after Calcutta and Bombay and other things. Sir, but what is happening in non-allocation? The Telangana doesn't get a single institution, sir. Although the State Reorganization Act provides for certain institution, names certain institution which will go to Telangana, but they have not come. We have been writing letters on that. The discrimination and neglect of Telangana are blatant in the distribution of higher education institutions like IITs, IIM, and Navodaya Vidyalaya. I quote and tell you, while all the states in the country got an institution, the Telangana government drew blank. 7 IIMs, 7 IITs, 4 NITs, 16 IITs, 3 IIITs, and 175 medical colleges are allotted to various states. Telangana drew blank. So, thus, Indian federal structure is under threat. Now, this takes me to the crisis the farmers are facing. On our Chief Minister writes a letter to the Prime Minister. Now, we have had a bitter experience of 11 months agitation by the farmers of Punjab. It is not the farmers of Punjab. Perhaps it has happened somewhere near Punjab or Delhi. All the farming community was at best with them. Their hearts were with them. What happened? The farm bills you have brought without consulting the states. And subject to agriculture subject, we have said this during the farm bills also. This subject of agriculture belongs to state. And not only violating the constitutional provision, your audacity is so much that you allowed 11 months and 700 people to die. There is not a single word and mention in the the speech. 14 months, not a single mention about it. This is what exactly bothers us. We in Telangana, we are today second largest producers of grain after Punjab. That we have attained because of our irrigation facilities and the power, and naturally the farmer. And we go to this side of the farmers who are on agitation. Sir,
The centre passed the farm laws without consultation with the state government. These acts were against the federal structure of the country, as agriculture falls under the list of the state. Furthermore, these acts neglect the long-standing demands of the farmers that sought implementation of legal regime of MSP. Although you have asked them to regime, you have promised MSP. The other day, there is no mention about MSP to law. There is no legal backing to law. And even the speech does not make any issue after so much of a big agitation. So that brings to me their love for agriculture. In the a day before 2016 budget, Modi ji announced that he will double the incomes of the farmers. I don't know whether he has doubled it or not, but he has certainly doubled the costs of the inputs. Today the costs of inputs have gone up according to your own statistics. They have gone up. And you are saying that you have doubled is just but a joke. The allocation of funds from the union budget has substantially declined and reached less than 2% at one stage. Understand this, what is happening. Today the growth rate is 3.9. If you want to reach the double figure, you must go to 12% to 14% growth rate. Where is 12 and 14? And where is the 3 point down this year? Otherwise you would never reach it 3.3. The year that you reached it was 3.3. Manya Dr. Kesar Rao ji, your time is already over. Oh, then I'll have to go very important, sir. One is the important, no, I'll take 1 minute, I'll take 2 minutes. Sir, employment, everybody, the world knew the employment is the greatest challenge that the nation was having. But is there a single mention about unemployment in this, sir? Why? That means you are totally blind, you are totally oblivious of what is exactly is needed in this country and what the people are asking for. So, see the employment, I'll say, closure of business houses, and because I head one of the standing committees which is concerned with industry, MSME, which is the employment giver. Closure of business houses and laying off of employees has led to sharp increase in unemployment rate. India's unemployment rate went up to 7.94% in 2021. In urban areas, it reached 9.30% in December 21, while in rural areas, it went up to 72. So it is important to note that the unemployment rate was already quite high, 6.3 even before the advent of COVID. So you can't take the excuse of COVID at this point of time. I'll not, the procession of employment can be understood, sir. People still say that we have 11 lakh vacancies in the jobs. And what is taken out today is 60 lakhs. Believe me, it is not 7 lakh. 60 lakhs, this is unorganized sector also need to be taken into consideration. 60 lakhs of people have gone out of the jobs in this area. It is much more. You see, as I said, there is not a single agency which can gather with credibility what exactly is the position today in the country. Sir, this takes me to the one sentence is about a failure to make in India. Is a scheme, it is a slogan, it is jumla. All that make in India is a manufacturing unit that you are asking. MSM is a manufacturing unit. It is manufacturing units which are in lakhs with us. We are giving 11 lakh jobs there. And you should have encouraged them. And what yesterday the minister says is the credit guarantee scheme is credit guarantee scheme is there for the last 4 years. You only brought it, I'm telling you, agreed. But still don't quote as your speech quote. Please conclude now. Sir, last is our chief minister, not out of frustration, after very thoughtful hours, has decided to throw open the idea of searching for a new constitution for this country. Because we know, under you, even the basic structure of secularism, basic structure of our commitment to the nation, or basic structure like governor's office, like this state list, and also the directive principles, which need Thank you, Dr. Kesar Rao ji, please. Are under threat. So he has thrown open. Please. With all respect, Thank you. I respect you and you are a senior member. You know me also. I know you nearly 40, 50 years. If you speak changing of the constitution, and we are the first people to oppose it, you can suggest for amendment.
But you can't say that the basic constitution Thank is you, going to Honorable change. Eleni. Please conclude. And they want to do it. thank And him. it is favorable I to them. thank him. The Nobody- RSS people want change of constitution. They demanded. Bhagwat Today- demanded. today and the if Congress- you speak on the same tune, we are not going to agree. The Congress and we'll leader fight today with wants tooth and nail. sees no need for a constitution. I've never said it will just. Please conclude, Dr. Kesarao ji. This is one thing. Dr. which is Kesarao ji, shown to please, you. please. Agree or don't agree? Please conclude. Please No, no. conclude. Please I'm conclude. telling you. So we are giving it. We are saying it. We have tried all. We have gone 105 amendments, Mr. Chairman, sir. 105 amendments. They have not satisfied us. So one idea has come. Why don't you go on for changing? Thank you. I also Thank think you. What exactly? Thank you, Dr. they do. Kesarao ji. So this is the new Thank you. constitution that we have Thank said you. that we had proposed to the nation for Thank a you, debate, Dr. Kesarao ji. for a discussion, not for acceptance. Thank you. Debating. Thank you. Time. Thank you very much. Thank you. माननीय सदस्यगण, दो माननीय वरिष्ठ सदस्यों के आग्रह आए हैं, वो कल और आगे नहीं उपलब्ध रहने वाले हैं, इसलिए आप सबकी सहमति हो तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद श्री कामाख्या प्रसाद तासा को बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं सशर्त समर्थन करता हूं। यदि आप हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, शासन की नीतियों पर की गई कार्रवाई, वो आगे की योजना, ये इसमें उसका उल्लेख होता है। लोकतंत्र में जो पार्टी शासन में होता है उसकी विचारधारा क्या है, उसी पर शासन की नीतियां निर्भर करती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, वादे किए, काला धन वापस आएगा, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, 15 लाख जेब में आ जाएंगे। 15 लाख का तो वो अमित शाह जी ने कह दिया जुमला था, तो जुमला मान लीजिए, लेकिन इनका तो उल्लेख आपने 2014, 2015, 2016 के राष्ट्रपति अभिभाषण के अंदर उसका उल्लेख किया है आपने, तो कौन सा आपने उसकी पूर्ति की है? माननीय सभापति महोदय, इनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, इसका मैं उल्लेख ब्रीफली करना चाहता हूं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने बड़े विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है। 7 साल में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई है। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। साथ में अगर आप देखेंगे कि समाज में धर्मांधता के कारण कटुता बढ़ती चली गई। एक तरफ जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपने गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया, वहीं समाज की समरसता और हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आपने डिस्टर्ब किया है, जिसका मैं सप्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माननीय सभापति महोदय, किसी भी शासन के टैक्स रेवेन्यूज का अगर आप उसका एग्जामिन करेंगे तो डायरेक्ट टैक्सेशन वो है जो कि टैक्स देने वाला है, दे सकने के लिए सक्षम है, उससे आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स आप आम जनता से लेते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2014-15 में जितना टैक्स कलेक्शन था उसका 55.39% डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, यानी कि यूपीए सरकार में हम अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते थे और आम जनता से 44.61% लेते थे, यानी कि 10.78% अमीर लोगों से ज्यादा लेते थे और गरीब लोगों से कम लेते थे। लेकिन सूट बूट की सरकार आई,
और सूट बूट की सरकार में 2021-22 का मैं आंकड़ा आपके दे रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स 55.39% से घटकर हो गया 46.43 और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ के 44.61 से बढ़कर हो गया 53.57, यानी कि अमीरों से कम टैक्स और गरीबों से, आम जनता से अधिक टैक्स। ये मूल रूप से मोदी सरकार की विचारधारा है आर्थिक नीतियों की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2014 में थी 5.6% और जैसा कि केशव राव साहब ने कहा कि कोविड के पहले ही 6.3% हो चुकी थी और आज 7.55% है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई। उस पर का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। यही नहीं है, अमीर और गरीब में जो गैप 1% जो है वो टॉप का जो पॉपुलेशन है उनके पास वेल्थ है और बॉटम 50% में बाकी वेल्थ है। सबसे ज्यादा अगर कहीं, जिसे कोजिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, सबसे ज्यादा विश्व में जो विकसित या जो मेन 5 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे ज्यादा अमीर गरीब में कहीं फर्क है तो भारत में है। आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे बढ़ोतरी की, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, सब्सिडी कम करते रहे और सब्सिडी भी कम करके आम आदमी पर कर के माध्यम से बढ़ाकर उन्होंने उन पर बोझा डाल दिया। अभी यदि आप देखेंगे इस बजट में 27% सब्सिडी मोदी सरकार ने कम की है। सब्सिडी किसके पास जाती थी? आम आदमी के पास जाती थी। टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो कहते हैं कि जहां कोविड के जमाने में भी अधिक से अधिक पैसा जिन लोगों ने कमाया है, जिनकी वेल्थ में बढ़ोतरी हुई है, उन पर सुपर रिच पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? आप वसूल करिए, लेकिन आम जनता पर आप बोझ डाल रहे हैं, आम जनता को हर चीज महंगा करके दे रहे हैं। ये आपकी नीति है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी कल ही राहुल गांधी जी ने इस बात पर उल्लेख किया है, यूपीए सरकार में गरीबी रेखा से लगभग 23 करोड़ लोग हम लोगों ने परिवारों को किया और उसके बाद आपकी सरकार आने से लगभग 20 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के अंदर चले गए। यानी कि गरीबों के अहित में ये सरकार काम करती रही है। किसान विरोधी भी है, जहां गरीब विरोधी है वही किसान विरोधी भी है। जैसे ही सरकार बनी सबसे पहला कदम क्या लगाया? पहला ऑर्डिनेंस, लैंड एक्विजिशन एक्ट समाप्त किया जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं मोदी जी कि किसानों का संगठन और किसानों की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं और उन्होंने किसानों के शक्ति को ना समझते हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करने का ऑर्डिनेंस लाए, लेकिन हम लोगों के विपक्ष की तरफ से विरोध होने के बाद उसको वापस लेना पड़ा। यही हालत जो किसान विरोधी 3 बिल आए उन पर भी किसानों ने विरोध किया और अंतोगत्वा उनको वापस लेना पड़ा। किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली बात रही, वो आपके सामने 2022 आ गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार मजदूरों का भी 29 प्रो लेबर लॉस को समाप्त कर दिए, डिस्कशन होने नहीं दिया और 4 लेबर कोड आप लाके आपने बिना ट्रेड यूनियंस के चर्चा के आपने मजदूरों का हक मार दिया, गरीब का हक मारा, किसान का हक मारा, मजदूर का हक मारा। इससे आपकी मनोवृत्ति समझ में आती है। संसदीय परंपराओं के विपरीत आपने काम किया है। जहां केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन की पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी कानून आता है उसके लिए पहले आपको स्टेक होल्डर से चर्चा करना चाहिए।
ये पॉलिसी है, लेकिन आपने उसको लागू नहीं होने दिया। यदि वही किसान विरोधी बिल का प्री कंसल्टेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप चर्चा कर लेते, और हम लोगों का तो प्रस्ताव क्या था, अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट यही था कि आप सेलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए। हमेशा यूपीए सरकार में सेलेक्ट कमेटीज को सौंपने के हमने हमेशा कभी उसमें कोताही नहीं बरती, लेकिन आपने सेलेक्ट कमेटी को न सौंपकर आपने जिस प्रकार से उन 3 किसान विरोधी बिलों को पास कराया, ये मान्य लोकतंत्र, ये परंपराओं के विपरीत रहा है। इसलिए हम आपके साथ कहते हैं कि ये सरकार गरीब विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। सामाजिक समरसता, ये देश में जो डाइवर्सिटी है, ये किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपका सोच और विचार शुरू से ही एक वर्ग को अराष्ट्रीय, राष्ट्रद्रोही करार करने का पूरा प्रयास आपने किया। सामाजिक कटुता बढ़ी है, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। किस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, धर्म संसद हो रही है, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ, पिस्तौल उठा लीजिए, जेनोसाइड के लिए कॉल किया गया। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के उंगली में चोट हो जाती तो ट्वीट करते हैं, लेकिन ऐसे उन्माद फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। ये दर्शाता है उनकी मानसिकता। मोदी जी की मानसिकता वही है जो मूल रूप से जिस संगठन से ये जुड़े हुए हैं उसकी विचारधारा है। जिस संगठन ने फूट डालो राज करो की नीति जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से सीखी, वही आज फूट डालकर आज इस देश में कटुता फैलाने जा रहे हैं। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, इस विचारधारा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी नीतियां बनती है, शासन कार्रवाई करती है, उसकी विचारधारा पर आधारित होती है। अब ये विचारधारा कहां से उत्पन्न होती है? ये विचारधारा मूल रूप से उस संगठन की है जो पूरे तरीके से इस देश में वैमनस्यता और धर्मांधता फैला रहा है, जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप नीतियां बना रहे हैं, वो अपंजीकृत है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई सदस्यता नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। उसने संविधान का विरोध किया, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया। बाबा साहब अंबेडकर के आपने उदाहरण यहां पर दिया है फ्रेटर्निटी इक्वेलिटी का, लेकिन ये संस्था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये संस्था के विचार पूरे तरीके से इस देश के संविधान और इस देश की लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसके विपरीत है, क्योंकि इस संस्था को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। साथ ही में इस विचारधारा ने शुरू में ही कहा था मनुस्मृति का पालन होना नहीं किया गया है, इसके लिए उन्होंने संविधान जलाया, संविधान का विरोध किया, तिरंगे को जलाया, भ्रम फैलाना चाहते हैं। अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव में आजादी के लड़ाई में भाग लेने वालों का उल्लेख तक आपने नहीं किया। ठीक है, आपको नफरत है, कांग्रेस से नफरत है, महात्मा गांधी से नफरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से भी नफरत हो सकती है, लेकिन शहीद भगत सिंह का नाम तो ले लेते। आप अशफाकुल्लाह जी का नाम तो ले लेते, आप चंद्रशेखर आजाद जी का नाम तो ले लेते, शायद उनसे भी आपको नफरत रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर के मामले में 370 में उन्होंने विरोध किया था। हाँ, विरोध किया था 1952 में, लेकिन जब 370 संविधान का अंग बना तब वो कैबिनेट के अंदर थे, कैबिनेट में उनका समर्थन था। इसलिए आप गलत कहते हैं कि आर्टिकल 370 was opposed by Mr. Shyam Prasad Mukherjee. He supported. आप समाप्त करें प्लीज, I'll take 2-3 minutes, sir. समाप्त करें। सर, ये फांसीवादी सोच है, और फांसीवादी सोच जो होती है, ये मूल रूप से उसका कार्य करने का तरीका होता है कि फला व्यक्ति और फला समूह ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के खिलाफ जो होगा वो राष्ट्रभक्त है,
और जो दुश्मन का समर्थक होगा वो राष्ट्रद्रोही है। और ये राष्ट्रद्रोही के मामले में ही अगर आप समझेंगे, देखेंगे माननीय कि किस प्रकार भीमा कोरेगांव केस में, एक उदाहरण आपको देता हूं, भीमा कोरेगांव में किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा गया कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए और 17 सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए, लेकिन 3.5 साल हो गए माननीय सभापति महोदय, आज तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ये काम करने का 2-3 मिनट्स सर, 2-3 सर प्लीज लेट मी ऑलरेडी 4 मिनट लेट मी कंक्लूड लेट मी कंक्लूड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार के लिए जो आप पैरवी कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, इसने हर मूल्य लोकतंत्री मूल्यों का इन्होंने हनन किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री हैं उन्हीं पर से तो शासन की जिम्मेदारी होती है, और नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका आप देख रहे हैं कि वे नाटक नौटंकी में माहिर हैं। यहाँ पर सबसे चुनकर आए सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, ना आए तो सदन पे आके उनके सदन पे आके आपने सीढ़ियों को दंडवत किया, संविधान को आपने नतमस्तक हुए, लेकिन आपने पूरे 2 मिनट प्लीज सर ओनली से प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, एक हमारी तरफ से हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह दीजिएगा कि थोड़ा बहुत सलाह हम लोगों की भी मान लिया करें, क्योंकि ये प्रजातंत्री व्यवस्था में जब तक आप सलाह मशवरे से काम नहीं करेंगे एक तंत्र राज नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे सुनिए माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बड़ा जरूरी है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से ये सिंगल मैन कैबिनेट है, और जैसा कि कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए, ये निंदक है हम लोग, निंदर नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर हम लोगों की बात और सलाह मानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सलाह हमारी नहीं मानेंगे तो जिस तरह से गलतियां आप करते चले आ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आपका नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे थे प्लीज, कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शब्दों का उपयोग करना, ये 238 प्लीज, आप संसदीय जनता में चुनौती नहीं दे सकते हैं, आपका संसदीय जनता में विश्वास नहीं है, इसीलिए संसदीय। ये आडवाणी जी ने कहा इज अ गुड इवेंट मैनेजर, अरे आडवाणी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा है, आडवाणी जी ने कहा इज अ गुड इवेंट मैनेजर, नाटक नौटंकी करते हैं। राकेश जी बैठिए प्लीज, इट विल बी एग्जामिन्ड प्लीज। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी। सभापति महोदय, आपको मैं आभारी हूँ क्या आपने बोलने के लिए मौका दिया, और मेरा पार्टी को भी, मेरा मिनिस्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्या बोलने के लिए मौका दिया। सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का भाषण का सपोर्ट में खड़ा हूँ, और मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ क्या हम लोग का गवर्नमेंट का पूरा विवरण वो दिया है। बहुत सीनियर ओपोजिशन लीडर लोग बैठा हुआ है, ओपोजिशन में बैठा है, यहाँ बैठ के ऐसा लगा क्या हम लोग का मोदी जी सब गलत किया है, उन लोग सब सही किया है, ऐसे लग रहा है। बाद में जब उन लोग का भाषण सुनने के बाद राष्ट्रपति जी जो बोला है उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि मोदी जी हम लोग का ओपोजिशन लीडर का भी बात सुनते हैं क्या, नहीं है क्या, उन लोग को बुला के यहाँ कल यहाँ प्रधानमंत्री जी पूरा ओपोजिशन लीडर का भाषण भी सुना। मेरे को नहीं लगा क्या ओपोजिशन लीडर, मैं उनका साथ लोकसभा में भी था, लगा क्या, ऐसा नहीं लगा क्या वो कोई कंस्ट्रक्टिव बात कल बोल पाए। जो भी है क्रिटिसाइज तो हो गई, ओपोजिशन लीडर से हम लोग एक्सपेक्ट किया था क्या ज्यादा वैल्यू बेस्ड बात बोले जो गवर्नमेंट को एक दिशा मिलेगा, लेकिन मैं न्यू जनरेशन का आदमी हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगा। जो भी है 75 ईयर्स का उद्यापित होने का टाइम में अमृत महोत्सव जब हम लोग कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है उसको हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, और पूरा वर्ल्ड उसको समर्थन करते हैं। कोई ऐसा लीडर है जो विश्वगुरु बोलने का टाइम में इंसाल किया है,
उन लोग को पता नहीं है क्या विश्व गुरु बोलने का क्या मतलब है और विश्व गुरु का रास्ते में कैसे गया प्रधानमंत्री जी, उसको भी फॉलो करना चाहिए। मैं किसी को यह नहीं करना चाहता हूं क्या 130 करोड़ जो जनता है उसको नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का बात किया, मैं सुना आज कोई एक सांसद ने बोला क्यों वैक्सीन पहले नहीं आया। वैक्सीन ऐसा नहीं है क्या उसको पानी डाल के वैक्सीन दिया जाए, उसको रिसर्च करने में टाइम लगा और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्या अभी जो मेड इन इंडिया का एक जो 3 बैंड का ये है, इसको पूरा वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्वीकृति दिया है और हम लोग का 100 करोड़ हम लोग वैक्सीन पार किया। तो वैक्सीनेशन में इतना टाइम गया, ऐसा सभापति महोदय कोई प्रधानमंत्री हम लोग का था, सम्मानीय प्रधानमंत्री युद्ध काल में भी उन लोग काम किया था, युद्ध था भारत पाकिस्तान का, भारत बांग्लादेश का युद्ध था, लेकिन कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर एक ही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ऐसा साइलेंट टाइम में जो साइलेंट किलर है, इसमें प्रधानमंत्री जी जो दिखाया हौसला, इसको हम लोग इसको धन्यवाद देते हैं और उनका साथ वो तो खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, इसको हम लोग मानते हैं। उपसभापति महोदय, वो राष्ट्रपति जी ने जो बात बोला है वो हम लोग पूरा समर्थन इसीलिए हूं क्योंकि योगा वो लेके आयुर्वेद तक, ट्रेडिशनल मेडिसिन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सब यहाँ पर वो राष्ट्रपति जी ने बोला है। हम लोग अभी देखा है 64 करोड़ रुपीस खर्च करके आयुष्मान भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बना रहा है, जो अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी एक संपत्ति हम लोग के लिए बन जाएगा। आयुष्मान भारत का ट्रीटमेंट का बात बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल का आदमी बोल रहा था, हम लोग का सांसद बोल रहा था क्या वेस्ट बंगाल को देखो, आयुष्मान भारत जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कोई प्रॉब्लम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ उसको देखेगा, क्योंकि हम लोग भी कोई मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, उसका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम लोग भी वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। आयुष्मान भारत का कैसे बेनिफिट मिले वो यहाँ से मोदी जी नहीं देखेगा, ये नहीं है क्या हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर यहाँ से देखेगा, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम लोग का साथ हम लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास भी होना चाहिए। प्रयास भी हम लोग का प्रयास का क्या प्रॉब्लम है, विरोधी का प्रयास का क्या प्रॉब्लम है, उसको भी आप लोग भी देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जनता हम लोग का है, वोटर हम लोग का है, प्रयास तो सबका होना चाहिए। इसीलिए यह नहीं है कि आप सबका प्रयास मतलब बीजेपी का ही प्रयास होना चाहिए, एनडीए का प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोग का भी प्रयास चाहिए। आप लोग तो खाली खोजते हैं कहाँ प्रॉब्लम होगा, उसमें आके आप लोग कहाँ वो उसको ठीक करने के लिए आप लोग उसके लिए खाली चांस मांगता है, दूसरा तो नहीं। आप लोग हेल्प तो कीजिए, क्योंकि आप लोग और आएगा नहीं, क्यों 2024 तक आने का कोई चांस नहीं, उसके बाद ही होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर को काम किया, आप लोग बोला है क्या बेरोजगारी, हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी पॉलिटिक्स से हैं, सब यहाँ पर जितना बैठा हुआ है सब जनसाधारण का साथ जुड़ा हुआ है, सबका तो ये प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सब जानते हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है, सब पॉलिटिशियन को इसको टेंशन है, ये क्या नहीं है, क्या विरोधी का है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऐसा है क्या मोदी जी क्या है, ये है क्या एनडीए क्या है, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन क्या है। एनएफएस जब आया, एलओपी साहब आप भी बैठा हुआ है, आप बोला है आनंद शर्मा जी है, एनएफएस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब आया, हम लोग को बोला गया क्या 80% से ज्यादा यहाँ पर बीपीएल आदमी है उसको इसमें लगाया गया, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जब आप लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था तभी तो 82% से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी था, उसको बाद में आप लोग क्या किया 27% बढ़ोतरी दे दिया, उसमें एपीएल कर दिया। एपीएल करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग का कितना आदमी का नाम वहां से काट गया, आयुष्मान भारत में उसका नाम नहीं घुस रहा है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका असर पड़ा, उसको असर पड़ के उसका बाद हम लोग को जो बेनिफिट मिलने वाला था वो अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये लेकिन बहुत सीरियस इश्यू है। आप लोग बोल रहे हैं 27% आप लोग बढ़ाती दिया, बाद में आप जाइए मेरा आसाम में जाइए, आप देखिएगा वो 27% का वो एपीएल बना देने के बाद लाखों करोड़ों आदमी उसका सुविधा से वंचित हो रहा है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इसको थोड़ा इंक्वायरी भी करना पड़ेगा। ये आप लोग बहुत बड़ा जानने वाला आदमी है, मेरे को पता नहीं है, मैं गांव में रहता हूं तो मेरे को पता चलता है, मतलब मेरा घर नहीं है लेकिन उसका सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका नाम नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका नाम क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम में आप लोग 27% को उसको एपीएल बना दिया था, वो एपीएल बनाने के बाद अभी उसको ये मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण राशि चलाया, काल बोलता आप हंस रहा था, एमजी एनरेगा को हम लोग का गवर्नमेंट ने कभी अगेंस्ट तो नहीं किया, ऐसे बोल रहा था कभी, लेकिन उसको तो बंद नहीं किया, उसको चला रहा है।
एमजीएनरेगा फंड कम हुआ है वो बात अलग है, लेकिन एमजीएनरेगा को ऐसा नहीं है कि हम लोग मनरेगा को हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसको बंद कर दो दूसरा चलाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चला मतलब पूरा पॉलिसी बंद हुआ, ऐसा नहीं है। सर आप लोग 70 साल का बात बोल रहे हैं, मैं आसाम से हूं, आप लोग भी आसाम जाते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सब जानते हैं आसाम में एक्सट्रीमिस्ट क्यों हुआ, इतना एक्सट्रीमिस्ट आसाम में क्यों हुआ। आज मणिपुर का आप लोग बात बोल रहे हैं, मणिपुर में 40 एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया, नागालैंड में क्यों आया, रिपुन बोरा जी बोल रहा था नागालैंड में क्यों आया, रिपुन बोरा जी आप भी जानते हैं क्यों ऐसा था। अल्फा का उद्भव कब हुआ था, आसाम में क्यों हुआ, एक्सट्रीमिस्ट क्यों आया, इसका कारण क्या बीजेपी है क्या, मोदी जी है क्या, वाजपेयी जी है क्या, ये आप लोग रेस्पॉन्सिबल है। इसको माने या ना माने मेरे को आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग का बहुत तथ्य है, आप लोग आंकड़ा लेके बैठते हैं, लेकिन क्यों आया मेरे को जवाब चाहिए। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, वो स्वाधीनता का 75 ईयर्स का बाद आज ट्रेन लाइन वहां पहुंच रहा है। मणिपुर में ऐसा हालत था, मणिपुर कोई जा नहीं सकता था, मणिपुर बोलने से हम लोग का आसाम का आदमी जाने के लिए टेंशन था। अभी मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितना बार गया, वो यहाँ से बात किया, अमित शाह जी गया, उसका बाद आज मणिपुर में एक शांति का परिवेश है, वो इलेक्शन अच्छा से हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए क्यों हुआ चाहिए। आप नागालैंड का बात बोल रहे हैं, नागालैंड गवर्नमेंट आप देखिए, मेरा घर का पास ही नागालैंड है, वहां पर जाने से ऐसा लगता था कि नागालैंड कहां जा रहा हूं, वापस आएगा कि नहीं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके वहां पर ऐसा परिवेश किया कि नागालैंड आराम से जाके आ सकता है। वहां पर ऐसा नहीं है क्या, ऐसा मत मानिए क्या हम लोग बीजेपी ने किया है क्या, बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट बनाया क्या, एक्सट्रीमिस्ट। आज देखिए आसाम गवर्नमेंट हम लोग का चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में अमित शाह जी गया, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन से वहां पर जो अल्फा फर्स्ट टाइम एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस बार अब सीज फायर करके कोई बंद नहीं दिया, इसको भी देखना चाहिए क्यों हुआ ये, क्यों एनडीए भी सरेंडर किया, क्यों आज बोडोलैंड का एकॉर्ड हुआ, क्यों ऐसा कार्बी आंगलोंग का जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ये किया, क्यों किया, क्योंकि ये परिवेश ऐसा है कि यूथ लोग का मन में आ रहा है क्या एक्सट्रीमिस्ट से नहीं होगा, इसको डेमोक्रेटिक में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले लैंडलॉक था नॉर्थ ईस्ट, इसमें जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा आदमी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में 5-6 करोड़ होगा जो उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, लेकिन टेंशन कितना था, जैसा जम्मू कश्मीर था ऐसा नॉर्थ ईस्ट था। नॉर्थ ईस्ट जाने से हम लोग को पूछता है आप कहाँ रहता है, आप कहाँ जंगल में रहता है क्या, हम लोग का जोरहाट भी टाउन है, ऐसा जंगल में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन उल्फा कितना है ऐसे यहाँ से पूछता था। अभी तो वहां पर डेली फ्लाइट जा रहा है, इम्पोर्ट डेली फ्लाइट जा रहा है, क्यों ऐसा परिवेश आ रहा है। नागालैंड में अभी गाड़ी जा रहा है, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरस्टेट बस भी चलाया जाए, यहाँ पर इंटरस्टेट बस भी चलाया जाए, वो बंद हो गया था। जरा जी आप, जयशंकर जी आप भी है, इंटरनेशनल वो अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री ने बोला, रेलवे मिनिस्ट्री क्या बोला, अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट को हम लोग जोड़ने वाला है बाय ट्रेन लाइन। ऐसा देखिए रानी गाइडलू स्टेशन में हम लोग गया, मैं इसीलिए ये बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग को आप लोग सिखाना चाहिए, अपोजिशन भी सिखाना चाहिए, खाली गलत ही बोला क्या, मेरा गांव का रास्ता अभी ठीक हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास माने मेरा पंचायत का नंबर है 57 गोरमुड़ बागीचा गांव पंचायत, उसमें बीजेपी का है, लेकिन 54 में कांग्रेस का है, वो कांग्रेस का वहां पर 2 करोड़ रुपया जा रहा है, लेकिन मेरा बीजेपी भी पंचायत में 1 करोड़ भी नहीं जाए, तो उसको मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास है। ऐसा होता है क्या बीजेपी को दे दो और कांग्रेस को मत दो, ऐसा तो नहीं है। आप जाइए आसाम में, माइनॉरिटी एरिया में जाइए, माइनॉरिटी हम लोग को वोट नहीं डालता है, उसमें बांग्लादेशी बोल के हम लोग बोलता है, वहां पर भी पंचायत में काम कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास नहीं है तो क्या है। हम लोग ऐसा एक उदाहरण दे दीजिए, हम लोग का गवर्नमेंट में कोई माइनॉरिटी, कोई हम लोग को वोट नहीं देने वाला आदमी का, गरीब का कोई चावल का कार्ड कटा है, रेशन कार्ड एक भी कटा है, एक भी घर उसका घटाया है, एक भी सुविधा उसको कटा है, ऐसे बोलिए तो प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। हम लोग जो पासबुक का बात उनको पूछा, प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं ये बैंक ने करेगा, बैंक को करने दो, तुम लोग मत करो, क्योंकि तुम लोग करने से बायस हो जाएगा, बैंक को करने, जो बीपीएल आदमी है उसको पासबुक खुलेगा। अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन वहां से चल रहा है। ये जो किसान का बात आप लोग बोल रहे हैं, कौन खोदेगा, आप लोग का स्टेज चल रहा है, उत्पादन कैसे दोगुना होगा, प्रधानमंत्री जी अपील कर सकते हैं, अपील किया दोगुना करो, कब दोगुना करो, एमएसपी दे रहा है, एमएसपी देने में आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को हम लोग का वहां पर एमएसपी इतना नहीं चलता। अभी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी का निर्देश से आसाम में जो ग्रेन्स है वो एफसीआई और 5 ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद कर रहा है, इसको देखना चाहिए, पहली बार कभी नहीं हुआ था। अब हम लोग का एमपी, आसाम का एमपी बैठा हुआ है, उसको पता है
अभी चावल ले रहा है, FCI ले रहा है, वो 5 ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है। इसको हम लोग गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं क्या इसको बाउंड किया। पहले क्या था, ये ग्रेन्स लंबा था, ये छोटा है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, ऐसे बोल के वो लोग खरीद नहीं करते थे। अभी वहां से लेकर वहां परचेस कर रहा है, जो 1940 रुपीज 1940 रुपया एक क्विंटल में दे रहा है। ये पहली बार एक परिवर्तन आया। मेरा ये मैं शारदा जी के बाद पहली बार कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये खरीद कर रहा है। और देखिए अभी आप लोग ऐसा नहीं है, असम आप लोग, असम का बात इसीलिए बोल रहा हूँ, बिहार प्रॉपर्टी था, उत्तर प्रदेश में तो राजधानी है, वो तो बात अलग है। लेकिन मेरा जो जगह मणिपुर का ही बात बोले, वहां से मैरी कॉम जी आया, उनको कितना प्रशंसित किया। लवलीना बड़गुहाई मेरा वहां से आया, उनको प्रधानमंत्री लाके कितना प्रशंसित किया। सानू भाई हम लोग का जो वेट लिफ्टर है, उनको भी कितना किया, स्टॉप किया। टारगेट टू द पोडियम, इसको भी कितना सराहना दिया। आप देखिए, मेरे को लगता है आनंद शर्मा जी आप भी बोलेंगे, शायद खारगे जी बोलने से तो ऐसा गुस्सा लगता है, मैं पास में रहने से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा ऐसा लगता है। आप हंसना भी चाहिए कभी कभी, इतना गुस्सा आता है आपको देखने से, हम भी डरता है। आप भी मेरे को बोलिए तो, आप अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या करता है यहाँ पर? आप तो बनेगा ही नहीं, हो बात अलग है, कांग्रेस तो बनेगा ही नहीं, हो बात अलग है। लेकिन आप इस टाइम में होता तो क्या करता, कोविड के टाइम में क्या करता था ना? मैं ऐसा बोला, आप होते तो क्या करते? आप गरीब, मैडम स्पीकर सर, गरीब आदमी को चावल मिल रहा है। जब बंद हो गया, उस टाइम में बंद हो गया था, बार बार नोटबंदी का बात बोल रहे हैं। कोई गरीब आदमी नोटबंदी से दुखी नहीं है, जिसका पास काला धन था वही दुखी है, दूसरा मैं नहीं जानता हूँ। ये मेरे को नहीं लगता है नोटबंदी में, आप लोग बार बार नोटबंदी बोलते हैं, हम लोग हंसता है, क्यों हंसता है? हम लोग का पास था ही नहीं उसका पैसा, जिसका पास था वही दुखी था। उसको दुखी है क्योंकि वो शायद अलमारी खोल के देखता था, वो इतना पैसा है क्या करेगा, हम फिर उसको लगा देता है, नहीं तो पानी में बहा देता था। हम लोग का बीजेपी का पास किसी का नहीं था, इसीलिए खुश है, हम लोग का बीजेपी का आदमी खुश है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि नोटबंदी, देखिए ऐसा मेरे को बोलिए, कोई ऐसा गरीब आदमी बोला क्या नोटबंदी खराब है? आप जाइए सर्वे कीजिए तो, मैं किसी जगह पे नहीं मिला नोटबंदी को खराब बोलते हुए, कैसा आदमी नहीं मिला। बोला अच्छा हुआ, हम लोग मांगने से नहीं देता था, अभी तो बैंक में दे रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसा मत बोलिए, बंद नहीं हुआ, छोटा नोट उस टाइम में खुला था। प्रधानमंत्री को धन्यवाद, क्या उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को भी धन्यवाद देता हूं। क्या चाय बागान में 800 चाय बागान में 10 लाख लेबर काम करता था, सबको कैश पैसा उस टाइम में देता था, छोटा नोट बना के देता था। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं देखिए एक स्पीकर सर, सभापति महोदय, इसमें सन्नत का बात पहले मणिपुर में ट्रेन लाइन पहुंच रहा है। अभी ये कितना बड़ा चीज है, कितना खुशी है। ये जिरीबाम से चल रहा है जो रानी गाइडलू स्टेशन में, उसमें पहली बार ट्रेन चल रहा है। इसमें देखिए हुरी अरुणाचल प्रदेश में आज ट्रेन लाइन जड़ित हुआ है। आज भारतीय रेल व्यवस्था पूरा इंडिया में, जो येलो बोर्ड है, येलो बोर्ड देखने से हम लोग को अच्छा लगता था, येलो बोर्ड अभी नागालैंड अरुणाचल में पहुंच रहे। येलो बोर्ड देखने से ऐसा लगता है पूरा इंडिया में हम लोग घुस गए, नहीं तो ऐसा लगता था कि यहाँ हम लोग इंडिया में नहीं है, ऐसा महसूस भी होता है। मैं असम में था, मेरे को भी महसूस होता था। आप लोग गुवाहाटी से वापस आते, जब डिब्रूगढ़ जाएंगे, जब डिब्रूगढ़ से और इंटीरियर जाएंगे तो और आप लोग को महसूस होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था। कुछ दिन पहले चाइना बॉर्डर में एक लड़का को गुम हो गया था। हम लोग का गवर्नमेंट का प्रोफेसर जयशंकर जी यहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री जी का इच्छा से वो लड़का वहां से वापस आया। ये कितना एक अच्छा चीज है। ये विश्व गुरु नहीं है तो क्या है, पहले होता तो वो गायब हो जाता था, उसको लेकर झगड़ा होता था। एक लड़का वहां चला गया, उसको वापस आया। हम लोग का MP, लोकसभा का MP कपिल गांव जी को धन्यवाद मैं देता हूँ। मैं इम्फॉल में आप देखिए मोरे लाइन अभी जो जा रहा है, आप लोग भी उसको धन्यवाद देना चाहिए हम लोग का गवर्नमेंट को। अभी साउथ ईस्ट को जोड़ेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट, आप लोग देखिएगा नॉर्थ ईस्ट को आप लोग को आंकड़ा दे देगा, पहले सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल स्टेट था। अभी उसको काट ऑफ हो गया, सन्नत का बाद उसका बंद हो गया था, फिर अभी चलने लगा। इसको अभी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पर अगरतला से जुरीबाम चल रहा है। 2 ब्रिज जो माकाओ और बोराक रिवर में प्रधानमंत्री जी ने उन्मोचित किया। अभी मेडिकल कॉलेज वहां पर चांदपुर, थोबाव और चांडल में मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर क्यों ऐसा, मैं मणिपुर का बात बोल रहा हूँ। मणिपुर में डेली कुछ ना कुछ होता था। 1 लीटर पेट्रोल का दाम वहां पर 500 रुपया होता था, कभी रास्ता बंद होता था, कभी क्या होता था, कोई ठीक नहीं था। अभी उसको शांति तो लाया। शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री का जो प्रचेष्टा है नरेंद्र मोदी जी का, इसको भी थोड़ा सोचिए। वो गामछा लेके घूमता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट उसको अच्छा पता है। ये खराब नहीं पाने का,
मनमोहन जी हम लोग का गुवाहाटी से था, पूछेगा कभी गुवाहाटी जो घर में था वो कितना बार गया होगा, कितना बार गया वो घर में, जो घर का एड्रेस वो दिया था कितना बार गया, उसको पूछना चाहिए। आप लोग भी उसको सलाह देना चाहिए था। बेटा सुनो, ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। इसीलिए क्यों बोला, मैं इसीलिए कंपेयर किया। हम लोग भी देखिए सर, अनिल जी, आपको मैं बोला, सुनिए ना आप, अनिल जी, मैं इसीलिए बोलता हूँ, वी आर प्राउड ऑफ मनमोहन सिंह जी। हम लोग मनमोहन सिंह जी को लेकर प्राउड फील करते हैं। अनिल सर, मैं प्राउड फील करता हूँ। क्या मनमोहन सिंह जी हम लोग का असम से, मैं उनका सीट से आया, मैं नहीं बोला, वो इतना विद्वान आदमी है, उतना विद्वान आदमी है, उसको असम से एक प्राइम मिनिस्टर था, इससे गौरव का बात क्या हो सकता है, बोलिए। मैं कोई खराब नहीं बोल रहा हूँ, और मैं वो प्रधानमंत्री असम से था। मैं बोलने का बात, मेरा बोलने का बात, मैं बोलने का बात यह है, क्या गुजरात से एक जाके प्रधानमंत्री बना, गुजरात से जाके एक प्रधानमंत्री जाके मणिपुर जा सकता है, नागालैंड जा सकता है, त्रिपुरा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश जा सकता है, वहां से क्यों नहीं गया? आप लोग क्यों सलाह नहीं दिया उनको? क्यों तब नहीं बोला? क्यों तब एक्सट्रीमिस्ट खत्म नहीं हुआ? वो बात मैं बोल रहा था। इसीलिए मणिपुर का बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है, आप रतन बोरा जी, आप मत बोलिए। आपने एक झूठ बात बोला है, आप मिसलीडेड दी हाउस, आप एक मिसलीडेड, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, आप एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपने बोला है हम लोग का गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट, आप कितना झूठ बात बोल सकते हैं? आप सदन का मैं बोल रहा हूँ, MP रिपुन बोरा जी बोला शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को हम लोग कुछ नहीं दे रहा है। अभी मेरे को आंकड़ा मिला, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को 5,32,000 5,32,000 स्टूडेंट्स को अभी शेड्यूल कास्ट स्टाइपेंड मिल रहा है। और इस बार नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट को 69,311, मतलब 1,600 करोड़ रुपया, 1,600 करोड़ रुपया उसको दे रहा है। 2021-22 में 46,115। ऐसे आप लोग यहाँ पर ही अगर मिसलीड करते हैं तो जनसाधारण को क्या बोलेगा? आप एक मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए, उसमें आप लोग झूठ बोल सकते। आप ऐसे बोल दिया क्या शेड्यूल कास्ट के लिए हम लोग सब गलत किया? क्योंकि कितना शेड्यूल कास्ट मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग का भी शेड्यूल कास्ट मेंबर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। मैं आपको इसीलिए बोला, आप थोड़ा पहले आप बोल के गया सर। आज हम असम के, हम लोग का मुख्यमंत्री जी, काबिल मुख्यमंत्री जी, और पहले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मिनिस्टर है, आयुष मंत्री जी जाके आयुष का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक हब, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, नॉर्थ ईस्ट को पूरा ऑर्गेनिक हब कर रहा है, और आयुर्वेद आयुष के एक महत्वपूर्ण राजधानी बनाने के लिए उतला हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पर मंत्री हैं, वहां पर वो काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा सिचुएशन है, मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा शांति अभी आया है, मेरा सुने, आयुष का वहां पर बात कर रहे हैं, जो लिवर लिंकिंग था, पहले नदी से जुड़ा हुआ था, गंगा से जाके बांग्लादेश होके ब्रह्मपुत्र का में आता था, अभी वो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था शुरू किया है। अभी पहले था गडकरी जी, उसके बाद मनसुख भाई मंडविया, फिर सर्बानंद सोनोवाल जी इसको काम कर रहे हैं। ये गति दे रहा है, एक गति शक्ति जो प्रधानमंत्री ने दिया, ये सही में गति शक्ति एक भारत को वाइबल भारत बनाने के लिए व्यवस्था किया है। इसको आप लोग मानना चाहिए, माने या ना माने आपका बात है, लेकिन हम लोग तो मान रहे हैं, पूरा इंडिया मान रहे हैं। ये आपको मैं हम लोग चाहता था एक्सट्रीमिस्ट ना हो। अभी मेरा मुख्यमंत्री वहां पर बोल रहा है, क्या PSO मत लेके घूमो। ऐसा एक स्थिति आ गया असम में, जो ऐसा असम था, कब बम फटता था, कब किडनैप होता था। अभी अपील हुआ है, सबको आप लोग की पता है, क्या उसको मत PSO मत लो। हम लोग थोड़ा बड़ा आदमी बोल के हम लोग छोड़ा नहीं, हम लोग छोड़ देगा कुछ दिन बाद। PSO लगा हुआ है, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बात करके उसको छोड़ेगा। ऐसा एक स्थिति आया है, जो स्थिति एक टाइम में था, कहां बम फटता था, कहां। इसीलिए बार बार मैं दोहरा रहा हूं, किसका दोष है? आप लोग तो बड़ा लीडर है, किसका दोष है? क्यों जोड़ा नहीं था? क्यों काटा प्लेन बन गया था? और इसको लेकर पूरा इंडिया क्यों टेंशन में था? ये टेंशन खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। कार्बी बोडो एक टाइम में, वाजपेयी जी का टाइम में बोडो एग्रीमेंट हुआ। अभी नरेंद्र मोदी जी का टाइम में कार्बी और डिमासा जो ग्रुप्स है, उनका साथ हो रहा है। कितना हो रहा है पता है आपको? 4,203। उसमें कितना पैसा लगाया है? अभी अमित शाह जी गया, उनको सराहना दिया। NDF, NLFT इसमें एग्रीमेंट हुआ। मणिपुर में जितना 35 ऑर्गेनाइजेशन अभी
मान रहा है, क्या गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा? क्योंकि कामाख्या उन लोगों प्रसाद को जी, काम करना चाहिए। आप कंक्लूड करें, एम्स कंक्लूड करें। सर, एम्स बन रहा है। एम्स बनने के बाद हम लोग देखिए, आप लोग बोला है एम्स में कितना पैसा हम लोग साउथ में जाके देते हैं। एम्स बनने के बाद एम्स कंप्लीट होने वाला है। प्रधानमंत्री जी शिलान्यास क्या, मेरे को लगता है उसका हाथ से ही उद्घाटन हो जाएगा कुछ दिन बाद। इसके मेडिसिनल हब भी बन रहा है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, मणिपुर, त्रिपुरा जो एकदम डेड बॉडी जैसा था, अभी वो खड़ा हुआ है और पूरा इंडिया का मानचित्र में आया है। इसीलिए मेरा गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूं, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। और राष्ट्रपति भाषण में हम लोग का बात, नॉर्थ ईस्ट का बात वहां पर लिखित दिया है, ये इतिहास में रहेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, ये गवर्नमेंट का जो काम राष्ट्रपति जी ने बोला, इसको समर्थन करते हुए मैं फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मेरा बात विराम। धन्यवाद। नाउ कि जो बात उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा, वो एग्जामिन किया जाएगा। नहीं, उसको नहीं निकाल दीजिए, क्योंकि वो इस आपने सदस्य है, आपने जो माननीय एलओपी कहा है, हाउस के सदस्य है। जब वो हाजिर यहाँ रहेंगे तब आप बात कीजिए। मनमोहन सिंह जी खुद नहीं किए। अरे आज जो रेल देख रहे हैं वो मनमोहन सिंह की देन है। Now a special mention, nothing else is going on record. A special mention, Dr. V. Sivadasan. Dr. V. Sivadasan, please. Just lay. Respected Chair, I am lay. the text of the only a special mention will go on record. Plate of the Anganwadis in India. Plate of the Anganwadis in India. Please, I am here. This special mention. Your time will be over. Please lay it. Anganwadis are crucial for providing. Please. Lay, only lay it. And basic health. Dasan ji, you lay only. You are late. You are late. Yeah, okay. I will read. Srimati Santa Chetri. Thank you, sir. Lok Sabha, please lay. Thank Do you, not sir. read, please lay it. We have no time. Thank you, sir, for allowing me to speak. I lay the request for the upgradation of terrestrial broadcasting of Doordarshan version instead of closures. Thank you, sir. Thank you. Sri Prasanna Acharya ji, please lay. Sir, my subject of my special mention is violation of operational guideline of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for private insurance companies in Bargarh district of Odisha. I lay my statement. Thank you. Srimati Mausam Noor. Thank you, sir. Sir, please lay. Mausam ji, please lay. Yes, sir. The need to disburse Bengal's dues for Ganga rejuvenation. I'm laying it on the table. Thank you, sir. Thank you. The House stands adjourned to meet at 10 hours on Friday, the 4th February 2022.
भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, भारत और मध्य एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी। 3 दशक की सफलताओं के साथ अब आगे के लक्ष्य भी तय करने होंगे। भारत और इजरायल के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में आए महत्वपूर्ण बदलावों के बीच आपसी संबंधों का महत्व और बढ़ा। नए लक्ष्य निर्धारित करने का समय। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। कहा, राज्यों में भी महिला आयोग की भूमिका का विस्तार समय की मांग। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने महिलाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ा। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, संकल्पों की सिद्धि के साथ भारत का भाग्य बदल सकते हैं युवा। वोकल फॉर लोकल के साथ स्वदेशी सामानों को दें बढ़ावा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश ने बापू को किया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने राजघाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। बापू के आदर्शों को और लोकप्रिय बनाने का लिया संकल्प। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए सरकार के कार्यों का जिक्र किया। सत्र को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभी दलों के साथ बैठक की। 31 जनवरी को लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा में सक्रियता से भाग लेंगे। सभी दलों के नेता ने आश्वस्त किया है इस बजट के महत्वपूर्ण सत्र में सब सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि बजट सत्र के दौरान देशवासियों से जुड़े हर विषय पर स्वस्थ, सार्थक और सकारात्मक चर्चा होगी। साथ ही सभी दलों के सहयोग से सदन को उत्पादकता के लिहाज से सफल बनाने में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की भूमिका हमारे हर क्षेत्र में है और हर महिला को पुरानी सोच बदलकर महिलाओं को लेकर नई सोच अपनानी होगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में है और हर महिला को पुरानी सोच बदलनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कम उम्र में शादी बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा न बने, इसके लिए बेटियों के विवाह की उम्र 21 साल करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है, इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का भी विस्तार आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। आज एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है और आज देश सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मूल पर चल रहा है। आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। पहले महिलाओं के स्किल्स को घरेलू कामकाज ही मान लिया जाता था। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरानी सोच को अब बदला जा रहा है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़कर देख रहा है। पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को घरेलू कामकाज का ही विषय मान लिया था। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए
इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है और परिणाम हमारे सामने है। आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। इसी तरह महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए देश दीनदयाल अंत्योदय योजना चला रहा है। सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें हम आज एमएसएमई कहते हैं। इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती है, उतनी ही महिलाओं की भी। आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया और दूसरों को भी रोजगार दिया। न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती रही। महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की इसी भूमिका को ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले और उसे प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण की सुविधा और सभी नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। युवा देश इस तरह के ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। यही उत्साह मैं अभी करियप्पा ग्राउंड में भी देख रहा था। ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उनमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं, जिनको भारत को 2047 तक अपने लक्ष्य तक लेकर जाना है। इसीलिए सभी की कोशिशें, संकल्प और उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी। आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में है, एनएसएस में है, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है। इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी।
प्रधानमंत्री ने कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि युवा वोकल फॉर लोकल के अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत के युवा ठान ले कि उन्हीं प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे जिसमें भारतीय श्रम लगा हो, तो स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। शर्मा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा उन्होंने एनसीसी टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को मेडल और छड़ी देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में एनसीसी कैडेट्स की परेड संपन्न होने के बाद हर साल 28 जनवरी को इस रैली का आयोजन किया जाता है। मार्चिंग कंटिजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में संगीत को समर्पित करने वाले स्टार्टअप तैयार किए जाएं, ताकि वैश्वीकरण के दौर में संगीत को भी वैश्विक पहचान मिल सके। हमारे ऋषियों ने स्वर और नाद को लेकर जितना व्यापक ज्ञान दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में लिखा है, नाद रूपः स्मृतो ब्रह्मा, नाद रूपो जनार्दन, नाद रूपः पाराशक्ति, नाद रूपो महेश्वर। अर्थात ब्रह्मांड को जन्म देने वाली, पालन करने वाली और संचालित करने वाली और लय करने वाली शक्तियां नाद रूप ही है। नाद को, संगीत को ऊर्जा के इस प्रवाह में देखने की, समझने की ये शक्ति ही भारतीय शास्त्रीय संगीत को इतना असाधारण बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज के साथ बिताए गए समय को याद करते हुए कहा कि हमें संगीत के साथ साथ भारत की राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृत की रक्षा भी करनी होगी और इसका विकास करना होगा। संगीत के क्षेत्र में शिक्षा और शोध को, इसको भी आप लोग इस फाउंडेशन के जरिए आगे बढ़ाने का काम सोच रहे हैं। मैं मानता हूं कि पंडित जसराज जी जैसी महान विभूति के लिए ये जो आपकी कार्य योजना है, आपने जो रोड मैप बनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन शुरू में 4 कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा। इसमें सभी रंगों और शैलियों के संगीतकारों के अंतर्राष्ट्रीय मानक रिकॉर्डिंग सेशन के साथ वीडियो पेश किए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर बड़े स्तर के संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के प्रदर्शन, कला सुविधाओं के संवर्धन की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर ये पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मध्य एशियाई नेताओं ने भारत मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अगले कदमों पर चर्चा की।
एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नेताओं ने हर 2 साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में व्यापार और संपर्क, विकास, सहयोग, रक्षा, सुरक्षा और विशेष रूप से सांस्कृतिक लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में आगे सहयोग के लिए दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और मध्य एशियाई देशों को आने वाले सालों के लिए महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान हैं। भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशियाई नेताओं के साथ अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर भी चर्चा की। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने नेताओं के सामने अफगानिस्तान की जनता को निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की तरफ से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मध्य एशिया एक एकीकृत और स्थिर विस्तारित पड़ोस के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है। आज की समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यह स्पष्ट करना कि भारत और सेंट्रल एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। भारत की तरफ से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेंट्रल एशिया इज सेंट्रल टू इंडियाज विजन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एंड स्टेबल एक्सटेंडेड नेबरहुड। दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग को एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शन का एक ढांचा स्थापित होगा। और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाना है। इसके माध्यम से हम अगले 3 सालों में रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकेंगे। प्रतिनिधियों की ओर से एक व्यापक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें स्थायी और व्यापक भारत मध्य एशिया साझेदारी के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया। भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 30 साल पूरे हो गए। 29 जनवरी 1992 को दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत तब हुई जब भारत ने इजराइल को पूर्ण मान्यता देते हुए अपना दूतावास खोला था। भले ही ये अध्याय नया था, लेकिन दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास दिन पर अपने संबोधन में कहा कि सैकड़ों वर्षों से हमारा यहूदी समुदाय भारतीय समाज में बिना किसी भेदभाव के सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है। उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 30 साल पहले आज ही के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी।
भले ही यह अध्याय नया था, लेकिन हमारे दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। जैसा कि भारत का मूल स्वभाव है, सैकड़ों वर्षों से हमारा यहूदी समुदाय भारतीय समाज में बिना किसी भेदभाव के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है और पनपा है। उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इजरायल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, तो भारत और इजरायल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने दिल्ली के राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर आयोजित सर्वधर्म सभा में शामिल होकर सभी ने बापू को याद किया। राष्ट्रपति ने उन्हें याद करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता की पावन स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को सत्य और अहिंसा का नैतिक आधार प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, बापू को उनके पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं। उनके महान आदर्शों को और लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। आज शहीद दिवस पर उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने साहस पूर्वक हमारे देश की रक्षा की। उनकी सेवा और बहादुरी को हमेशा याद किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और सत्याग्रह के उनके विचारों ने मानवता को प्रभावित किया। उनके आदर्शों को आत्मसात करते ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने हर भारतीय के हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की अलख जगाई। उनके विचार और आदर्श सदैव हर भारतवासी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के संवाहक, स्वराज के महान उपासक लाला लाजपत राय को नमन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। लाला लाजपत राय एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और जोश और जुनून के साथ संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ कई संसद सदस्यों ने भी पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं।
बीते दिनों हुई संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 28 जनवरी 2022 को जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति की बैठक हुई, जिसका एजेंडा था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य। 31 जनवरी 2022 को विदेशी मामलों की समिति की बैठक हुई। एजेंडा था भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति, संभावनाएं और सीमाएं विषय पर विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य। 31 जनवरी 2022 को अधीनस्थ कानून पर समिति की बैठक भी हुई, जिसका एजेंडा था मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों की स्थिति पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV.